the icon also changes, right? And again, I'll go through some stuff later, but I'll start with the code. So first you define if it's a Solidity code or not. You tell the compiler what version it is. So you start with Pragma, which is a way to tell the Solidity compiler that it's of what version. So I told you that there are opcodes associated. So the Pragma works with one opcode which tells the compiler that, yeah, this is of this version. So this is one of the latest version which Solidity is right now, 0.8.7. It has not yet developed a main version. When I say main version, or when I say, uh, you know, non-beta version, then I mean if it's 1 point or it's 2 point or it's 3 point something, right? So the first main version comes when some company releases 1.0.0, right? So that has to be understood. Now when I tell the Solidity compiler that this is the version I am working with, then we start with the contract by telling the contract name to Solidity compiler. So you already have the autocomplete here, and you just use that autocomplete and you name the contract. I'm gonna name it vending machine because I'm working on a vending machine contract. Just like classes, contract is nothing but a class, but it is known as contract, as the terminology smart contract is more used in Ethereum space and more blockchain space. So when I create contracts, there are two things to be understood. There will be member functions, which will be changing the variables which the contract has. So I'm gonna first add the owner of this contract. So I'll define one variable of address type, which will be public, because I want the people to access this whenever they want. So I'm gonna name this owner because it's it should be verifiable. So that's why. तो आप देख सकते हैं कि address is a new type you might not have seen in other programming languages. So address is basically the address of account. If you want to store an address of an account which has some specific length and specific bytes limit, so that's why Solidity has created this special type which is nothing but an object type, and you can use this when you want to store an account address. Now JSON या ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हो कि इसमें सपोर्टेड नहीं होते हैं, तो by default what we do is we use a mapping. I know you might not understand mapping, or you might not feel very comfortable with mapping, but it's just a key value pair. So आप अगर समझ पाए या ना समझ पाए, I will explain this in much detail. So you say mapping, you say what type of key it will be. It can be a string type, but in my case it will be an address type. Because जब हम लोग बैलेंस की बात करते हैं, किसी के बैलेंस की, तो आप जब भी बैलेंस की बात करते हो तो वो अकाउंट के सामने के बैलेंस होते हैं. तो अकाउंट सॉलिडिटी में स्टोर एड्रेस से किया जाता है. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एड्रेस हियर. एंड देन अगर आपको बैलेंस देखना है तो दैट विल बी एन इंटीजर, राइट? तो दैट्स व्हाई एन इंटीजर बैलेंस. यूएंट अनसाइंड इंटीजर. अनसाइंड इंटीजर का मतलब है कि इट वोंट बी नेगेटिव, it will be positive always, right? I'm also gonna name this public, sorry, scope this public, so people can access this. And
I'm gonna name this cupcake balance. Pardon me, the speed is a bit slow here. So now in every class you see a constructor which is gonna initiate or instance like which is gonna instantiate the owner and cupcake balances or the member. Yes, sorry, I'm disturbing. Once I have one announcement. The computer student who are watching this, they can done parallelly with sir. You can make your hand also on this programming. Yeah, Yes, sure. he is doing very slowly. Such with him also, you can also practice it. Yeah, Parallelly, surely. you can open the remix platform, whatever the yes is showing you people, and you type whatever the yes is typing. So Yeah, please try to be implement so that you people will be practice also with the yes, and he will helping. He is showing us how to program on the blockchain programming. So please, students, try to be implement it. yeah, sure. I have put a link on the chat so you can Yes, go to it the. is visible. Same, you just type remix.ethereum. It will automatically come first link and you can click on this Yeah, and follow the same step what the yes have been followed. If you are having any problem also, you can ask him. yeah, sure. So please No, student try to implement it. yeah, sure. So, You can continue. yeah, thank you, ma'am, for that announcement. And if you find any issues, you can directly put them in chat. I'll solve those issues later. Secondly, now when whenever you are working with object oriented programming, या जब भी आप एक OOP वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्जांपल जावा या सी शार्प में काम कर रहे हो, तो आप एक क्लास डिक्लेयर करते हो और उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो. इट कैन बी अ डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बट इन माय केस आई वांट इट टू बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में व्हाट आई विल डू, आई इंस्टेंटिएट this variables, because that has to be done in this case, and that is needed in this case. So जब मैं बोलता हूँ कि हु इज द ओनर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, देन जब कोई ये डिप्लॉय करेगा तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड उसका जो सेंडर होगा, जो अकाउंट वो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो ही उसका ओनर होगा. तो वो हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? खुशी, आई विल आंसर द क्वेरीज लेटर so that I can explain better right now. So जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो तो उसके साथ हमेशा एक अकाउंट एसोसिएटेड होता है. द रीजन इज बिकॉज there has to be an account associated with every transaction, and solidity contract deployment is also a transaction, a type of transaction. तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो या कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टेंशिएट करते हो, तब हमेशा ही उसको भी एक ट्रांजेक्शन माना जाता है. तो वो हम लोग एक्सेस इस ऐसे कर सकते हैं. यू जस्ट टाइप मैसेज and you can see sender. So message.sender, message will be property of every transaction. So you can access the property in any contract by just writing message dot whatever the property you want to access. So there are mainly two properties which are which are used. One is message dot sender and another is message dot amount, where amount कितने ईथर्स सेंड किए गए या कितने ईथर्स मतलब रिसीव किए गए, उसकी वैल्यू उसमें आती है, राइट? तो दिस इज वन थिंग. नाउ सेकंड, आई वांट टू इंस्टेंशिएट द कपकेक बैलेंस. तो उसमें मेरे को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस, जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है तो उसको एक अकाउंट मिलता है. तो उस अकाउंट के बैलेंस में मेरे को 100 डालना है, मतलब वॉट एवर द अमाउंट यू वांट टू ऐड. तो
उसका हम एड्रेस कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यू जस्ट हैव टू टाइप एड्रेस डॉट दिस। तो जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, यू विल बी एबल टू एक्सेस द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, एंड उसको हम इनिशिएट करेंगे 100 के साथ। तो जब भी ये डिप्लॉय होगा कॉन्ट्रैक्ट, देन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट के अगेंस्ट हमको 100 कपकेक्स मिल जाएंगे, राइट? दैट इज वन, दैट इज कंस्ट्रक्टर, and you can type if you want. Now if anyone has queries, you can ask, so that no problems will be there. Khushi, you raised your hand, you can speak. Because allow who raise the hand, the person who, because please allow them. Till I ask, yes, yes, this cake balance is inbuilt some package or whatever this cake balance. Which one, ma'am? Cake public cake balances, mapping address unit, public cake balances. This cupcake balances is a variable which I declared. So this is an mapping. Basically mapping means No, my query is actually it is an inbuilt variable or user defined. which one? Cupcake balances. Yes. It's a user defined Okay. variable. So you have already defined it somewhere. Yeah, this is the definition. So this is the type, mapping type. If you can see, this is Okay. this whole is known as type. This is Okay. an access specifier if it is Oh. public, private, or protected, and this is the variable name. User defined variable. Okay, this mapping is a inbuilt variable. No. This is an inbuilt type where you Okay. can define. So give you an example. Just give me. Got it, sir. Got it. No, I will explain mapping a bit more, so you guys can know. So sorry. So if you see this, if you can see this name, age, and car. Yes, yes. So yeah, here name is string, age is string, and car is string, right? Ji. And the values are different, John, 30, and null. Yes. But here in Solidity, you cannot do this. You'll have to define the variables, the key type as well as the value type. So this is the key type address, and Yes. uint is the value type. So cupcake balances will have key value pairs. The key will be of address type, and the value will be of integer type. So that's what this is saying. This statement says that. This uint is unassigned data type or something else? This is an integer, unsigned integer. Unsigned Okay. integer means it will not be negative. It will Yes, always be yes. positive. Okay. So Go ahead. no, Yes. any queries, ma'am? If you can ask your students, they can speak. If you have, I don't think students having. If they have, they can type. Yeah, Students, if sure. you are having, you can type. Last line explain. Cup balance address. Sital is asking about last line. Uh, Cup balance address. This is value assignment. I think so. Last yeah. line, yes. So basically, when you deploy a contract, this contract will be deployed. It will have its own address. So when it will be deployed, it will generate its own address, which can store balance, right? Which can store some values. Yes. So when I deploy this address, suppose say, so for example, if you are living at your house, you will be having one address, right? Yes. So Yes. so the same will happen when someone is creating a contract, it will have its own address. So address, this means the contract's address. So I want to instantiate the cupcake balance of this address to be 100, right? Okay. So think like that. If you are visiting a vending machine, the vending machine will have the stuff, right? And when you buy from vending machine, the stuff gets deducted.
So this is that vending machine stuff. It will have 100 stuff, and when I purchase something from vending machine, it will get deducted from this 100. It means this is the value 100. You are putting some value to the vending machine. Yeah, I am putting values to the vending machine. So vending machine is the variable, user defined variable or inbuilt? No, ma'am, what I'm saying is vending machine is a contract. So vending machine will be deployed on the network and it will have its own address, No, right? sir. This is I got. My question is that vending machine is name. What you are giving contract is inbuilt variable, the data type, and vending machine is user defined. I think so, or inbuilt variable. Vending machine is a contract which is defined by us, right? Yes, yes. User defined contract. Yeah, this is a user defined We can contract. put any name. It is not compulsory. We have to be put vending No, machine. no, no, no. You can put as whatever you want, right? Yes, yes. That only I want to ask. Thank you. Yes, Yeah, you can go ahead. yeah. So just like classes, you can name classes anything. That way, vending machine or any name you can give. Yes, So, one more query is from the student side. That is contact a multiple address type. sir, can contract have multiple address type? No. Contract will have one address only. So it will be deployed to one address only. As you will be living at one home, you might have another homes, but you will be living at one home. The same way, Got it, yes, got it. yeah, Got it. Nitin, this is anybody can have, nobody can have more than one address in computer also, like same as. yeah, but there is one terminology that I want to clear. When you redeploy this contract, it will have a new address, but the old address will be vague. So when you shift to a new home, you will have a new address, just like in contract. When you deploy it again, it will have a new address. The old address won't be working. That's it. Old address will remain same or it will be destroyed. Yeah, it won't be destroyed until you self-destruct it. There will be Okay. a Got it. self-destruct method here. So you Okay, can okay, call this. great. Thank you. So again, so what if someone wants to, so I'll continue if the queries are completed. So Yes. whenever you think of a vending machine, you want to refill a vending machine, right? When you want to refill a vending machine, you think it's a function or it's a query which will be there, right? So I'll create one function to refill the vending machine. Think like whenever you are creating a smart contract, think like what it will be doing, and those will become its function. So that's how you think in smart contract development. So I will also if you want to refill, you'll have to provide one amount. So that will be amount, and this every member function has to be public, but it has to be specified here. Now if you can see, refill is a public function, so that can be accessed by anyone. And now, you'll have to think of the conditions first. Whenever you are creating a function, you'll have to think about the condition which will fail the contract, right? So the conditions which you need to be specifying is to be defined in require. तो require में हम क्या बोलते हैं कि भाई ये कंडीशन फेल हुआ तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रीफिल फंक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, राइट? तो अगर रिफिल कौन कर सकता है, आप अगर सोचे तो ओनर ही रिफिल कर सकता है। जो ओनर है हमारा वही रिफिल कर सकता है, कोई भी आके रिफिल नहीं कर सकता, राइट? कोई भी आके रिफिल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उसकी चाबी नहीं होगी। सो इसीलिए दिस हैज टू बी सिंपल। ये सैंपल होगा मैसेज डॉट सेंडर जो है, ये फंक्शन जब कोई कॉल करेगा तो वो एक अकाउंट के अगेंस्ट करेगा। तो वो अकाउंट का एड्रेस जो मैसेज डॉट सेंडर मैंने पहले भी बताया, जो भी फंक्शन कंस्ट्रक्टर या कुछ भी कॉल होगा वो हमेशा अकाउंट के अगेंस्ट होगा। तो वो अकाउंट अगर ओनर है तो ही आगे बढ़ना है, अगर नहीं तो क्या बोलना है, ओनली ओनर।
can refill, right? That way आप अपनी कंडीशंस चेक कर सकते हैं। अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ नीचे आ जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो this string will be executed. Okay. It's very simple, just like if, but it has a difference in text, so don't be worried. और अगर रिफिल मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमको क्या करना है, कपकेक बैलेंसेस को बोलना है कि हाँ, जो अभी कपकेक बैलेंस है उसको बढ़ा के आप जितना अमाउंट है उससे बढ़ा दीजिए, सो दैट वे यू कैन रीफिल, राइट। नाउ दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिफिल में। किसी को डाउट है, फॉर लाइक जस्ट फॉर माय नॉलेज, अगर किसी को रिफिल में डाउट है तो दे कैन आस्क। ओके, नो, आई कैन सी नो, सो आई Yes, विल you have heard. Yes, everybody got या it. सो अगेन आपने रिफिल लेगा। इफ यू थिंक मोर अबाउट, लिंक पे जाओ और यहाँ पे टाइप करना शुरू करो। सॉरी ये तो रहेगा ही। मैम, कैन यू म्यूट प्लीज? मैम, कैन यू म्यूट प्लीज? या श्योर। सो अगर आप वेंडिंग मशीन के बारे में और सोचे, सो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू हाउ टू थिंक इन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, राइट। सो गेट इन, मतलब मेरे साथ सोचना भी शुरू करें तो सही रहेगा। तो अगर आप वेंडिंग मशीन के बारे में और सोचे तो आपको पता चलेगा वेंडिंग मशीन से लोग सिर्फ रिफिल एक फंक्शन नहीं होता, लोग परचेज भी करते हैं वेंडिंग मशीन में, पैसे डालते हैं, उनको कोक या लेज या जो भी चिप्स मिलेगी वो मिल जाएंगे, राइट। तो हम लोग इसको बहुत सिंपल रख रहे हैं, अभी हमारे पास सिर्फ कप केक है, तो एक और फंक्शन बनेगा विच विल से दैट यू कैन परचेस। उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली द अमाउंट ही और शी वांट टू परचेस, राइट। उसके बाद पब्लिक, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज पेएबल। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट द सिंटैक्स। ओके, नाउ एक इतना तो आपको पता चल ही गया है, दिस इज अ पब्लिक फंक्शन, इट हैज वन पैरामीटर विच इज ऑफ यू इन टाइप, और इस फंक्शन का नाम परचेस है। दैट्स वेरी सिंपल, यू गॉट टू नो इट। नाउ व्हेन आई से पेएबल, मैं बोलता हूँ पेएबल, पेएबल का मतलब ये होता है कि आपको उसके साथ मेरे को करेंसी भी भेजनी पड़ेगी। तो इथेरियम की डिफॉल्ट करेंसी है ईथर्स। इफ यू डोंट सेंड ईथर्स, द परचेज विल फेल। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस पेएबल, बिकॉज तो कल किसी ने मुझे पूछा था कि हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से पैसे कैसे कमाते हैं। तो दिस इज वन वे ऑफ अर्निंग मनी। यू टेल देम दैट दैट्स something, some functions are payable and some are not. If you want to go for a premium function, you will have to pay some ethers. So that way we earn money from a smart contract, or our clients earn money from smart contracts. मैंने मोस्टली बैंक एप्लीकेशंस में काम किया है, तो there is this is very useful there. So payable is a way to tell solidity कि हाँ, जब भी मैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आई वांट सम अमाउंट, राइट। तो वो अमाउंट हमको कैसे मिलती है, जैसे मैसेज डॉट सेंडर हमको मिलता है, वैसे मैसेज की एक और प्रॉपर्टी है मैसेज डॉट वैल्यू। तो दिस विल टेल यू कि कितने अमाउंट ऑफ ईथर भेजे गए हैं, राइट। आई एम सॉरी, आई मूव फॉरवर्ड, बट मतलब मेरा मतलब ये है कि रिक्वायर में हम चेक करेंगे कि जो अमाउंट हमको भेजी जा रही है वो, सॉरी, तो जो अमाउंट हमको भेजी जा रही है वो मैसेज डॉट वैल्यू में आएगी,
वो अमाउंट एक ईथर है या नहीं, मतलब जितने अमाउंट उनको परचेस करने हैं, हमने कपकेक का प्राइस एक ईथर रखा है, तो जो कपकेक का प्राइस है इनटू अमाउंट करेंगे, वो मैसेज डॉट वैल्यू से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो ही हम उसको परचेस करने देंगे। नहीं तो हम बोलेंगे कि तूने बहुत कम पैसे भेजे हैं, हमारा कपकेक ज्यादा वैल्यू करता है। सो बाय डिफॉल्ट सॉलिडिटी में ईथर नाम का कांस्टेंट है विच यू कैन एक्सेस। तो व्हेन आई से वन स्पेस ईथर, तो उसका वैल्यू हो जाता है वन ईथर। व्हेन आई से वन डॉट वी, वी इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ ईथर। तो जैसे हम लोग I know you have questions. I will be open to question after completing this function, but I'm telling you what this is. So V is the smallest units. जैसे एक रुपए को आप 100 पैसे में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे एक ईथर को बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे V एक उसका यूनिट है। Ether is the largest unit and V is the smallest unit. You can find out the amount here. One, I will do it for you. Third equal to how many? So you can see 10 raised to 1 8 way equal to 1 ether, right? So वैसे ही जैसे एक रुपया इक्वल टू 100 पैसे, वैसे एक वे इज इक्वल टू एक ईथर इक्वल टू 10 रेज टू 18 वी, राइट? आई क्लोज दिस। सो हम बोल रहे हैं जो मैसेज डॉट वैल्यू है और जितना अमाउंट उसको परचेस करना है वो एक ईथर होना चाहिए। मतलब जैसे 2 कपकेक्स में मेरे को परचेस करने हैं, तो द अमाउंट द वैल्यू सेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 1 ईथर, मतलब 2 ईथर के बराबर होनी चाहिए इफ यू आर परचेसिंग 2 कपकेक्स, राइट? दैट्स द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोड। एंड अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे you you must be 1 ether per cupcake. Simple. Now you don't have to have only one condition, there can be multiple conditions as well. तो दूसरी कंडीशन इसमें अगर आप सोचो तो क्या आएगी, अगर आप सोचो दूसरी कंडीशन क्या आएगी, तो ये वो कंडीशन होगी जिसमें अगर मेरी वेंडिंग मशीन में कपकेक्स ही नहीं है तो मैं उसको सेल कैसे करूंगा? तो मैं उसको बोलूंगा कि मेरे कपकेक बैलेंस में, which is again address dot this, and अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट है तो ही आगे बढ़ो, नहीं तो उसको बताओ कि वी डोंट हैव इनफ कपकेक्स। दिस इज सेकेंड कंडीशन। तो कंडीशन चेकिंग हो गई। अब मेन हमारे इसमें परचेज फंक्शन में आते हैं, मतलब परचेज फंक्शन की मेन फंक्शनैलिटी में आते हैं। तो जब कोई परचेज करेगा तो उसके बैलेंस प्लस होगा, और जब कोई परचेज करेगा तो हमारी वेंडिंग मशीन में से बैलेंस माइनस होगा। सो हमारी वेंडिंग मशीन में से जितना अमाउंट उसने परचेज किया विल माइनस दैट, एंड उसके उसके अकाउंट में विल प्लस द अमाउंट। So this is the simple purchase function. This means कि address dot this means the contract's address which is carrying the cupcake balance or the initial value of the vending machine, उसमें से हम माइनस करेंगे अमाउंट, और जो दूसरा है हम उसमें प्लस करेंगे अमाउंट। सो
मतलब जो मैसेज डॉट सेंडर है जिसने हमको परचेज का रिक्वेस्ट भेजा है, उसके अमाउंट में हम लोग 2 कपकेक्स प्लस करेंगे। दिस इज अ सिंपल वेंडिंग मशीन एग्जाम्पल। अगर आप किसी को भी परचेज में डाउट है तो दे कैन आस्क। ईथर वैल्यू चेंज टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक। सूरज, आई थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज। ईथर की डॉलर वैल्यू की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे। ईथर के यूनिट्स की बात हो रही थी। तो हाँ, ईथर की वैल्यू डॉलर में या ईथर की वैल्यू करेंसी में टाइम टू टाइम चेंज इसलिए होती है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी सप्लाई बहुत कम है। तो ईथर इज इन लिमिटेड नंबर्स। अगर आप देखें तो ऑनलाइन सर्च मार के देख सकते हैं कि ईथर इज इन लिमिटेड नंबर्स, और जैसे जैसे वो कम होते जाते हैं उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। और सेकंड, मैंने जो बोला वी यूनिट है ईथर का, दैट हैज नो रिलेशन विथ द प्राइस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। वो बस एक चीज है कि एक ईथर इक्वल टू 1000 में वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती। इट विल नेवर चेंज। और गायत्री, यू आर रेजिंग हैंड, यू कैन स्पीक if you want to. Because Yogesh, please allow Gayatri to speak. He want to ask some queries. Gayatri, you can type also, no problem. यस सर, जो स्कोप होता है एक्सेस स्पेसिफायर का यहाँ पे पब्लिक है, तो इसका स्कोप कहाँ तक है? और पब्लिक मतलब anyone can access it, right? बट सर, जो रीफिल मेथड है वो तो ओनर एक्सेस कर सकता है, परचेजर या वो कोई तो इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, तो there are two ways to do it. अगर आप देखो तो मैंने रिक्वायर ऑलरेडी लिख रखा है। द तो रीजन, वो तो ठीक है, अगर हम ये चाहें कि वो इस मेथड को एक्सेस ही ना कर पाए, वो तो बाद में चेक करेंगे ना मेथड के अंदर जाने के बाद कि मैसेज डॉट सेंडर अगर ओनर है तो। अगर हम इसको कुछ और भी तो एक्सेस स्पेसिफायर होंगे जो ये हम इस पे लगा सके कि ओनली ओनर ही इसको एक्सेस कर सकता है, ना हाँ, कि पब्लिक बनाया जाए इसको। नहीं, डेट आई अग्री एंड दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। आप जो बोल रहे हो ना, उस चीज को एक हम्म अलग कंसेप्ट है। हम खुद के अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स बना सकते हैं जिसको मॉडिफायर्स बोलते हैं। तो बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू बॉम्बार्ड विथ दोस, नहीं दैट्स सर, व्हाई। सॉलिडिटी में भी तो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं पब्लिक के अलावा, जैसे इंटर्न हुआ या। हाँ, इंटरनल है, देर आर अदर्स एक्सेस स्पेसिफायर एज वेल। आई एम टेलिंग यू, जैसे इंटरनल है, हम्म वो इंटरनल दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय एन इंटरनल फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल ऑल्सो। जब एक्सटर्नल में बोलता हूँ तो देर आर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, एक्सटर्नल, इंटरनल, आई अग्री टू दैट। बट राइट नाउ आई डोंट वांटेड टू बॉम्बार्ड, दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने अभी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में बताया। एक्सटर्नल कैन बी कॉल्ड ओनली वाया एन एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट। वो किसी और मतलब उससे कॉल नहीं किया जा सकता। क्या बोलते हैं, किसी और मतलब जिस मैसेज डॉट सेंडर कैन नॉट कॉल दिस, ओनली एंड ओनली अ स्मार्ट कॉन्टैक्ट कैन कॉल इट, राइट? तो वो एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब आप समझ लीजिए प्राइवेट हो गया, और वो इट कैन बी ओनली कॉल्ड विद द फंक्शंस। परचेज रिफिल को कॉल कर सकता है पर रिफिल कैन नॉट बी कॉल फ्रॉम आउटसाइड, right? There are access specifier which you can get in, get familiar with, and they are available on solidity documents as well. तो to answer this query, अगर आपको चाहिए कि ओनली ओनर इसको एक्सेस करे, तो there is a way in solidity where you can define your own access specifier too, right? तो I hope I answered your question. बट अभी मैं उसको सिंपल रखना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। Any more questions?
Yes, Gayatri, if you clear, can move next step. Yes, ma'am. Yes, yes, we can move forward. Yeah. Ma'am, do you have any questions? Yes, now I don't have, I got it. Okay. So now I know I'm not a best programmer because it can have errors. So I'll compile this if it doesn't have any error. Uh, so for compilation, you go to the next tab, next function you see here in the vertical, nav bar. So जो second वाला है उसमें you can see that the compiler version you can select as per your Solidity version, and there are other versions available as well. But right now I'll go with 0.8.7, which is my Solidity version. The language has to be Solidity. There is another language YAL, which is like which is I haven't worked with, but it is somewhat popular nowadays. And I'm gonna say compiler default. You can select other compilers, but it doesn't much make any difference. So these are some additional stuff which you don't have to take care about. So you can see I was perfect in all though. So this got compiled. Uh, Sometimes I get Here we confused. have to be click for compile. You can see this compile test.sol, right? You can see this button. Okay, compile test dot solve. Yeah, when you compile, you see the contract name and it got compiled. Now there was one There is an error in mine. there was one question yesterday, that how can we connect our smart contract with a web application. So you can see here ABI and bytecode. These two you'll have to copy, and you can use this with Web3 package. There is a Web3 package. I have Web3, one error in mine, so I asked once if you allow me. sorry. I write your codes, but you have shown me. I am also compiling my code. So I get some error in the line of mapping address. What is the symbol after this address? This unit. This is an arrow symbol equal Okay, to I use something else. equal to and greater than. So what I was explaining is yesterday someone asked one question, how to connect our web app with smart contracts. Yes, sir. Yeah, so that is done by ABI and bytecode. You'll have to copy this, and after compiling you can use this to get your contract, you to interact with your contract. That is a one complex thing you will learn afterwards, but first priority should be smart contract development, compiling and deployment, right? But if you want, then you can go through Web3, and I'm also providing you Web3 document. You can go through this if you want to, and you'll be able to do what you asked for. Gayatri, you raised your hand again. No, sir. Yeah. So, ma'am, did you got it compiled, or are there? I did not get compiled. I think so some problem is there from my side. I did some mistakes. No problem. Maybe after this, we can sit together and Oh, get it I'm compiled. correcting you. You can continue. Yeah. So when you get like compilation done in the vertical horizontal, vertical navbar, you can see the third symbol, deploy and run transactions, right? Yes, So I got successfully compiled my code. Thank you. yeah, no problem. So here you can see the environment.
You can select JavaScript VM Berlin or London. That's not a problem. Injected Web3 and Web3 provider are two methods where if you want to connect with an external environment. जब आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने अपने लोकल में रन कर रखा है नोड, या आप उन्हें अपने या आपने किसी टेस्ट वीएम को कनेक्ट करना है, देन यू कैन use these two. You will find many tutorials outside. I'm not gonna explain those things right now, but for your knowledge, injected web3 and web3 provider are for connecting with an external environment. And remix by default provides its internal environment. So those two, Berlin and London, if you can see, so based on your area, whatever is nearer to you, you can select those zones, Berlin or London. And मतलब it just of time, अगर आप बर्लिन सिलेक्ट करोगे, अगर बर्लिन आपके पास में है तो वो जल्दी डिप्लॉय हो जाएगा इंस्टेड ऑफ लंदन. सो दैट्स व्हाई. So you can see, Remix by default provides you 10 or 12 accounts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's 15 account. Before it used to provide 10 accounts, but it's 15 account. You can see by default it provides 15 accounts with 100 ethers. So just one person asked me that ethers price changes, right? So ethers are very costly to buy, so that's why we deploy our contract on the VMs that are provided by Remix, or we deploy it locally, right? So इसीलिए हम लोग लोकली ट्राई करते हैं पहले कंपाइल करने का, क्योंकि कॉस्ट इज इन्वॉल्व और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है इफ यू डिप्लॉय इट ऑन टू मेन नेटवर्क, राइट? सो दैट्स व्हाई. नाउ गैस लिमिट, मैंने जैसे बोला था कि हर ट्रांजेक्शन के साथ एक गैस एसोसिएटेड होती है. मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको गैस पेमेंट करना पड़ता है, तो दैट इज दैट गैस लिमिट. तो आप ये सेट कर सकते हो कि अगर मेरा गैस 30,000 से ज्यादा जा रहा है, 30,000 वे से ज्यादा जा रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन को वही रोक दिया जाए. सो दैट इज व्हाई गैस लिमिट इज स्पेसिफाइड, बट वी डोंट राइट नाउ विल गो थ्रू इट. एंड दिस इज वैल्यू, जो मैसेज डॉट वैल्यू की बात मैं कर रहा था, दैट इज दिस वैल्यू. तो जब आप इसमें मैसेज डॉट वैल्यू में कोई भी वैल्यू सेंड करते हो, तो वो फंक्शन या कॉन्ट्रैक्ट को मिल जाती है बाय डिफॉल्ट. सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स. नाउ कॉन्ट्रैक्ट में आपको वही कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे जो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुके होंगे. तो मेरा वेंडिंग मशीन सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग हियर इन कॉन्ट्रैक्ट्स. सो व्हेन आई डिप्लॉय, you can see deployed. इनसाइड डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स में भी आपने डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं, राइट? तो डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको एक एड्रेस मिल जाएगा विच यू कैन कॉपी. मैंने आपको बोला कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है तो उसके साथ एक एड्रेस एसोसिएट हो जाता है, इसीलिए मैं दिस के साथ एड्रेस और दिस के साथ वो एड्रेस कर रहा था. तो आप अगर देखोगे तो यू कैन सी दैट एड्रेस राइट नाउ हियर. दिस इज द एड्रेस, दिस इज हाउ एड्रेस लुक्स लाइक, and इस एड्रेस के अगेंस्ट द वैल्यू 100 will be stored, right? तो that is there. now हम लोग इसको फेल करने का ट्राई करेंगे. what we'll do, हम लोग इसको रिफिल करेंगे, बट उस अकाउंट से नहीं, इस अकाउंट से डिप्लॉय हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे, इफ यू कैन सी. बट हम इसको दूसरे अकाउंट से रिफिल करने का ट्राई करेंगे विच हैज 100 ईथर्स, बट हम उसको दूसरे अकाउंट से रिफिल करने का ट्राई करेंगे, तो इट शुड फेल, राइट? इट शुड फेल. तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 10 और रिफिल करने हैं. एक मिनट. तो अगर आपको देखना है व्हाट द इफ इट्स फेलियर और नॉट, तो आप देख सकते हैं कि वो फेल हुआ. मैंने बोला कि हम लोग फेल करने का ट्राई करेंगे, हमने उसके साथ उसको रिफिल किया,
जो अकाउंट इन्वॉल्व नहीं, जो ओनर नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो आप देख सकते हैं वो फेल हो गया ट्रांजेक्शन। एंड उसमें आप रीजन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं, ओनली ओनर कैन रिफिल। तो आर कोड इज वर्किंग वेरी फाइन। एंड अगर मैं इसको ओनर के साथ ट्राई करूं, लेट्स ट्राई इट विद द ओनर जिसने डिप्लॉय किया है, उसका अकाउंट से मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई एम गोना यूज 10, और जब मैं रिफिल करता हूँ इट शुड गेट सक्सेसफुल। यू कैन सी इट इज गेटिंग सक्सेसफुल, राइट। और आपको वो देखना है, तो इसीलिए मैंने इसको पब्लिक बनाया है कपकेक बैलेंसेस को, ताकि हम लोग बैलेंसेस गेट कर पाए। तो हम लोग इसमें कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डाल देंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस के अगेन रिफिल होगा। तो व्हेन यू सी, तो 110, 100 बाय डिफॉल्ट था, 10 मैंने ऐड किया, नाउ 110। सो आर वेंडिंग मशीन इज working perfectly fine. Now I'll try to purchase, right? So But yes, yes, once from where you get this balance, cupcake balance 110, how you get it? I have also refilled, so it is already refilled. So how you check this 110? so जब आप डिप्लॉय करते हो कॉन्ट्रैक्ट को, मैंने बताया कि Deployed. हाँ, Again, we have to be deployed. पहले हमने सिर्फ कंपाइल किया मैम, अगर आप देखो। Sir, listen, I have compiled as you have my compiled. हाँ Refill also I done deployed it is successfully. हाँ, तो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको वेंडिंग मशीन दिख रहा है क्या? अच्छा हाँ, मैंने अपना नाम रखा, वो मुझे डिप्लॉय मशीन में, यस डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, यस इट इज विजिबल, मैंने सभी नाम रखा है तो वो मुझे विजिबल है। हाँ, तो वहां पे आपको कॉपी वाला सिंबल दिख गया होगा। जी जी, हाँ, उसको कॉपी कीजिए कर और लिया। कपकेक बैलेंसेस के अगेंस्ट अच्छा, उसको, यहाँ पे ये वाला पेस्ट करूँ? हाँ, पेस्ट करिए, ओके क्योंकि ओके, वो दैट्स आई फॉरगेट दिस नाउ। यू कैन सी 100 देयर। नाउ आई शुड क्लिक समवेयर और नाउ? या ये कपकेक बैलेंसेस पे क्लिक करो, एड्रेसेस पे हाँ, डाल के, एंड यू विल बी एबल टू सी 100 उसके 100 नीचे। 100 तो नहीं है। क्या है? हाँ आ गया, यस टू टाइम आई अपडेट, सो 120 इट इज देयर, ओके थैंक यू। या श्योर I श्योर, rebuilt all time, two time actually, that's good. not a problem. Now moving forward, we'll purchase one, we'll try to purchase and we'll try to fail this. How we'll try to fail this? Now I know you might have some problems here, but I'll tell you how will it fail. I'll try to purchase one. Fail तो we have already seen ना, you have already shown fail. नहीं, रिफिल का मैम, रिफिल का बताया मैंने, परचेज का फेल नहीं बताया। Purchase का, okay okay. हाँ, तो व्हेन आई एम परचेसिंग वन कपकेक, तो इट शुड हैव वन ईथर, राइट? इट शुड बी वन ईथर, लाइक मेरे को वैल्यू भी वन ईथर भेजनी पड़ेगी, और कपकेक का परचेस अमाउंट और मेरे को कितने परचेस करने हैं दोनों भेजना पड़ेगा, राइट? बट राइट नाउ आई एम ओनली सेंडिंग वन। तो जब हम लोग परचेस करने जाएंगे तो इट विल फेल, एंड इट विल गिव अस अ रीजन कि यू मस्ट पे वन ईथर पर कपकेक। नाउ हम इसमें वैल्यू कैसे भेजेंगे? You just go here to the value, you say 1 and say ether, तो एक ether जा, और you can purchase, and you can see the purchase got successful because हम लोगों ने कपकेक का इनफ प्राइस पे किया है, राइट? सो द कपकेक बैलेंस अगर हम चेक करेंगे तो 109 होना चाहिए, यू कैन सी दैट, राइट? If we click on purchase, then what we will get? परचेस में एक आपने परचेस में आपने कितना अमाउंट डाला था मैम? सेम आपने डाला 1 और वैल्यू में भी 1 कर दिया, मैंने क्लिक किया परचेज पे, ये सक्सेसफुली हो गया, पर आउटपुट कहाँ देखी आपने? मैम इसमें जब भी पेएबल कोई फंक्शन होता है ना, जी जी, तो उसमें सिर्फ सक्सेस और फेलियर आता है। यही उस आएगा बस, दैट्स हाँ ओनली आई वांट टू हाँ, नो। आपको अगर उसका आउटपुट चेक करना है तो कपकेक बैलेंसेस में देख लीजिए कि एक डिडक्ट हुआ या नहीं वेंडिंग ओके मशीन में। ओके ओके ओके, हम्म, हाँ यस इट इज डिडक्टेड, थैंक यू। हाँ हाँ, सो दैट्स हाउ
Smart contract is very different that. And now I'm gonna tell you what other things are. When you execute successfully, it will generate a transaction hash. It will generate a from. It will generate a to. From मतलब जो अकाउंट से हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, टू मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, गैस मतलब कितना ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन फीस मेरे को लगा, एंड these are all transaction cost only. We won't go through all. Hash matlab the hash of the block or transaction. It's a transaction hash only. Input input and outputs are encoded, and अगर आप decoded देखना चाहते हैं तो decoded input ऐसा दिखेगा. आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, एज इन इट्स अ पेएबल फंक्शन. लॉग्स में भी कुछ नहीं, और वैल्यू हम लोगों ने 1B भेजी थी. तो यू कैन सी दिस ट्रांजेक्शन डिटेल्स हियर. अगर आप मेन नेट पे करोगे तो ये ट्रांजेक्शन हैश लेके आप मेन नेट के ब्लॉक्स में जाके देख सकते हो. सो दिस इज द वे, यू नो इट्स वेरी डिफरेंट देन नॉर्मल program execution, right? That's how you do it. That's how you deploy a contract. That's how you execute one contract, and that's how you test one contract, right? ये लास्ट वाला जो ये है, इट्स अ प्लगइन मैनेजर. आप एक मतलब एडिशनल प्लगइन्स डाल सकते हो अपने इसमें, बट वी आई वोंट रेकमेंड यू गोइंग थ्रू दिस राइट नाउ, बिकॉज जितना कम आप प्लगइन्स के साथ काम करोगे उतना ज्यादा आप टाइप करोगे, और जितना ज्यादा आप टाइप करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे. So I won't recommend just going through plugins. So these are the tabs which I already explained you. So you can see all the tabs I have explained. One is editor. You can directly editor में जाके आप test कर सकते हो. And one is for compilation. This published on IPFS is not for you right now. You can publish this contract or publish a web app on IPFS by using this, but I won't recommend you right now going through it. Rather than that, you can try with a public network. So this is a compilation and a deployment and transaction running. So these are the tabs, and these are how you develop a remix smart contract and how you deploy a remix smart contract. Any questions till now, or any questions for remix or maybe solidity? Yes, yes, I have one question. See, if we want to learn more, so is there any help like MATLAB and other tool are having their help tool? So with the help of that, we can continue learning more. Sorry, like there are applications, there are many resources available. Uh, Mostly you can visit ethereum.org. They have these already. Vending machine is already there. There are other smart contracts also. You can directly visit ethereum.org and go under developer docs, and you can learn those stuff. So yes, this program we have created one contract. Is it a one block or it is not a block? Ma'am, block is a different stuff, right? Uh, how I can explain you. Block is, suppose when you are doing a transaction, there will be only a single transaction, but bunch of transactions. If it meets the block requirement, it creates a block, and that bunch of transaction goes through a block, and the block is mined, right? Now I know you might have questions right now, but I'll try to explain those as well via notes. I'm gonna create one note. So there will be a miner who will mine the blocks, right? There will be a gaming theory which needs to be solved, which is known as nuts, right? And
while some miner is solving this gaming theory. So say miner solving gaming theory, right? There will be transactions, n numbers of transaction, n into transaction, right? These transactions need to be, combined in a block, right? But block is not yet mined because miner has not yet solved the gaming theory, or he has not yes yet guessed the nuns, because it takes time to guess the nuns. It almost takes 10 minutes right now in Bitcoin blockchain, but in Ethereum it's somewhat faster. So the more blocks you have, the more complex the gaming theory becomes, right? So when miner is solving the gaming theory, till that time the transaction will be in a queue, and those transaction, when the gaming theory is solved, miner combines those transactions and build a block. A block, and that block will have these n transactions which were in queue until the miner was solving the query, right? And the block will also have some limit that these many transaction will it can store. If the queue has more transaction than that block, then the transaction will have to wait more. So that's how this works. So block is not what you consider a transaction, right? It will be in a block, but when it will be mined, it is based on a gaming theory. So when the miner will solve the gaming theory, then only the transaction will be in a block. Until it will be in a waiting state in a queue, right? If that answers your query, ma'am. Okay, I mean, I got it. Blockchain is different than the contract. So this block is created by the miner, not by the everybody. Yeah. So miner is a basically automatic machine. It's not an entity. Yeah, that machine will be owned by an entity, but miner is an automatic, you'll have some algorithms which is running on your computer, and it is continuously running, and when one solves the gaming theory, the block will be mined, right? So mostly it takes more than 10 minutes, and it depends on the availability of miners as well. But right now in the country or in the whole world, we have many miners, and nowadays gaming theory becomes very, they are solving it very, very nicely and very, very fast. So that's how it works. And when I'm deploying this contract, this is one transaction. This is only one transaction. It will be in a queue until someone solves the gaming theory. When the gaming theory will be solved, then only it will be in a block. So right now you can see faster execution because this is NVM, and it will be mined as soon as you hit deploy, or as soon as you click on purchase. But in the real time it's very slow. That is why blockchain is not yet considered in many transaction space, where which applications will have many transaction, it will be not considered that it should have blockchain. इसीलिए हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ट्रांजैक्शन और ब्लॉक अलग होता है. ब्लॉक को गेमिंग थियरी के बेस पे ही सॉल्व किया जाता है. If that answers your query. Thank you. Yes, go ahead, please. Yeah, sure. So if you have any questions in this solidity or remix query, then you can. Anybody else is having query? Gayatri, Sital, or Suraj, or anybody else? Yeah. Most welcome. Otherwise, yes, go ahead. Yeah, if nobody has any query, I will also show you one more thing. So I'll close my browser. So
So if you want to run a blockchain in your local, or if you want to run a blockchain in your local, there are two ways. You can either create your own blockchain, or you can either use the predefined tools which are there. So one of the predefined tools I know is Ganache. So if you can see this Ganache, I'm just, I'm not gonna be executing any transaction, or I'm just giving you a knowledge. How can you, perform the transactions, and how you can get your development done on local, right? So Ganache is a tool which, you know, just like Remix provides you 10 accounts, Remix provides you 15, but uh, this provides you 10 accounts, Ganache, and you can connect it via RPC server, via web3, which I already told you, and you can use this link to connect to this blockchain, which is running on your locally, and you can perform smart contract development or deployment, and you can see your contracts in this tab, right? And there are transaction and blocks which you can see right here as well, right? Now how you can download Ganache, I am also gonna explain that. I know this is a bit uh, boring, but I will let you know what Ganache and Truffle is. It just a somewhat uh, local deployment or development tools which you can find online. If you see Truffle suit, you will find Ganache, Drizzle, and other things on your on this website. I'm gonna put this here, so you can download Ganache from here. Go to Ganache and sorry, you can either download CLI. CLI is what where you'll have to manage this by your own, like via CLI, and you can download from here troubleshoot/Ganache, and you can download. It is showing Mac OS, but it is also available for other. Right now, I am using Mac OS, so that's why it is showing Mac OS. But you can use other for other OS as well. I'm gonna put that on chat, and you can try this out if you want. So this is one local development. Now I'm gonna try creating my own blockchain. Uh, it's very difficult to show you in this small session to create your own blockchain, but I am gonna try a small one. And secondly, I have already defined some of the routes and other things, because I don't want you to focus on other things than blockchain. So you want to learn more about Express, you can find out online. I have already defined some routes which are APIs basically. It's I'm gonna explain this later. This is a framework which we use for APIs, but you can see that I have not yet defined my own blockchain or block. Right now, for setup, I'm gonna take 2 minutes. I'm gonna stop sharing my screen, and I'm gonna set up my blockchain right now, and I'm gonna show you how to create one block, right? So just give me 2 minutes. Till that, if you have any questions, you can ask. Ma'am, pardon me for that. I am gonna pause for 2 minutes only.
So I don't think anyone has any question. Yeah. If a block fails with transaction, miner have to go through another game theory. Yes. Yes. Umesh, yes. That is how it works. So I'm gonna tell you what block is, what a block structure look like. So I'm gonna create one class which will be named as block, and it will have some predefined properties. Say I have already shown you the address demo where I have shown you how what blocks contain. Block contains transactions, block contains previous hash, block contains current index of the transaction, current index of the block, and other things. So I'm gonna try creating that right now. So pardon me if I am, it's a class. It will have one constructor which will have index, मतलब block का number, जो current block है उसका number. It will have timestamp, जो current timestamp है वो. Now मैंने आपको बोला था कि उसका पेलोड ट्रांजेक्शन्स होता है, तो it will have transactions and it will have previous block का number और block का hash, right? So this is how our constructor looks like, right? These are the properties which commonly is available under a block. तो अब हम उसको initiate करेंगे. This is a parameterized constructor if you can see. तो हम लोग इसको initiate करेंगे this dot index equal to index अभी sorry this dot timestamp. जब भी हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं इन इनसाइड आर जावास्क्रिप्ट, हम लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द अंडरस्कोर. तो this is the naming convention we use. This dot transactions equal to transactions. uh, just a minute. Sorry about that. Hello. Am I audible, ma'am? If you can confirm. Yes, sir. Yeah, sure. So you can see transactions here. I am sure it's gonna fail in the end, but I'm trying to get it perfect, right? So pardon me if it fails. I will try to compile and successfully, execute it. Okay, now transaction and now previous hash. So I'm gonna just मैं previous hash के साथ उसको वो कर दूंगा. Don't get it confused if it is typed so fast, क्योंकि मेरे में इंटेलिजेंस अनेबल्ड है. तो आई एम गोना एक्सप्लेन दो. तो मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है और उसकी प्रॉपर्टीज जो भी मेरे को कंस्ट्रक्टर में मिलेगी उसको मैंने अपनी प्रॉपर्टीज के साथ असाइन कर दिया है, राइट? नाउ what I am gonna do, till now if you have any doubts you can ask, right? I don't think you will have, but अगर किसी के पास डाउट है तो you can ask, right? Now इन सारी प्रॉपर्टीज को गेट करने के लिए हम लोगों के पास एक गेटर होना चाहिए. So I'm gonna write getters for this timestamp. I'm gonna write transaction का getter. अभी what is left, timestamp transaction and previous hash का getter. So these are getters, nothing else. And index, right?
Now I'll have to export this. If you are not familiar with JavaScript, then get is used for getters, and we'll have to export this block. We'll have to export this block as हम लोगों के पास हमको इसको ब्लॉकचेन के अंदर यूज करना है, तो हम लोगों को इस ब्लॉक क्लास को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग ब्लॉकचेन फाइल के अंदर यूज कर पाए. So this is how a block looks like in a normal blockchain. It will have index. हाँ, इससे ज्यादा चीजें हो सकती है, but right now I'm making as simple as possible, right? तो अगर आप एक्सपोर्ट करें ब्लॉक को, I have left space, हाँ बस. Okay, so I have created a block. I will save this, and if you have any doubts till now, you can ask. Ma'am, any doubts? Do you have any doubts? No, sir, please continue. One more thing you'll have to know कि ब्लॉकचेन के अंदर अभी मैंने गेमिंग थियरी नहीं इन्वॉल्व की. द रीजन इज, नहीं तो मेरा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगेगा और मेरे करंट सीपीयू में इतनी एग्जीक्यूशन पावर नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट introducing any gaming theory here or any nuns creation here. So if you want to do that, I will provide you my existing blockchain implementation which I did, but it will be at end of the session, right? I hope you don't have any question. If you have, then you can ask me questions. Now बहुत सारे ब्लॉक्स बना के एक ब्लॉकचेन बनती है, राइट? So that blockchain will contain many blocks and many transactions. We'll try to, एक minute, I think any question? Hello, yes, okay. Okay, sorry about that. तो बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके एक ब्लॉकचेन बनती है, और वो ब्लॉकचेन के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हम लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शन लिखे थे. तो ये ब्लॉकचेन में कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं जो मैं ट्राई करूंगा इसमें लिखने के, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. If I get fail, don't blame me, because blockchain is very complex right now to create. Again, I'm gonna create a class. So I don't know why it's not typing. Just give me a moment. My VS got hanged. Just give me a moment. I can fix this in a moment. Yeah. Yeah, now it's working. Can you confirm if you can see my screen? Because I am not. Yes, sir. Yeah, sure.
So I have written const, and I'm gonna use some libraries here. So to create a hash, if you know why to create, why you want to create a hash, to create transaction hashes or block hashes or maybe a previous hash, I'm gonna use a function called create hash, which is from an library crypto, which is there in by default in Node.js. You can use other libraries if you are using other functions. Let me import create hash. Now I'm gonna import the block, require block. Sorry about that. Yeah. So I'm gonna create one class now, class block chain, and I'm gonna create one constructor here. कंस्ट्रक्टर में मैं क्या बोलूँगा, सो जब भी बाय डिफॉल्ट ब्लॉकचेन क्रिएट होती है तो उसका एक ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएटेड होता है जिसमें उसकी सेटिंग्स या वो मतलब जो बाय डिफॉल्ट उसकी जो सेटिंग्स होती है वो उसके अंदर स्टोर्ड होती है, बट राइट नाउ वी वांट मेक इट दैट कॉम्प्लेक्स, उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ब्लॉकचेन होता है उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। दिस डॉट चेन, चेन इज अ प्रॉपर्टी, अभी हमारी चेन में कुछ नहीं है। दिस डॉट करंट ट्रांजेक्शंस, तो मैम जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि करंट ट्रांजेक्शंस वो है जो क्यू में रहेंगे, और जब गेमिंग थियरी सॉल्व होती है तो करंट ट्रांजेक्शंस वो एक ब्लॉक में चले जाते हैं। सो दैट्स हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, so that's why I have defined current transactions here. Right now last is I will create a new block. हाँ, आपको न्यू ब्लॉक यहाँ पे नहीं दिखेगा, न्यू ब्लॉक फंक्शन में आगे जाके बनाऊंगा, वो कैसे बनाऊंगा क्या बनाऊंगा वो आगे जाके देखते हैं। Till now if you have any doubts you can ask. No doubts I think, so I'll move forward, or I think I should print this chain as well, so you got to know current chain, and this will print the json.stringify the current chain. Yeah, now you can see that there is a difference between this chain and this chain. तो वो डिफरेंस ये है कि ये गेटर मैं आगे जाके बनाऊंगा, एंड दिस विल बी चेन विच इज पॉइंटिंग टू ब्लॉकचेन, मतलब विच इज माय करंट चेन, मेरी करंट ब्लॉकचेन, राइट। उसको गेट करने के लिए गेटर बनाऊंगा बिकॉज आई वांट दिस टू बी प्राइवेट, राइट। सेमीकोलन, नाउ जैसे मैंने बोला गेट चेन करके मैं एक वो बनाऊंगा गेटर, and this will return this dot chain. Again I want a getter for nodes. I will explain this later. मतलब एक ब्लॉकचेन में बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं। राइट नाउ आई हैव नॉट implemented nodes here in constructor because वो आगे जाके ऐड होते हैं। करंट ट्रांजेक्शन्स को सेट करने के लिए जब कोई ट्रांजेक्शन आएगा बिफोर सॉल्विंग द गेमिंग थ्योरी, तो आई हैव टू ऐड दोस ट्रांजेक्शन इन द क्यू ऑफ करंट ट्रांजेक्शन, so that's why I am defining a setter of current transactions. So you can see current transactions will have transactions, and this dot current transactions equal to transactions, right? Now I will have to get the transactions, तो मैं करंट ट्रांजेक्शन को गेट करूंगा।
right? So this dot current transaction, let me close this. तो अगेन नाउ हम लोगों के पास एक फैसिलिटी होनी चाहिए जो ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स को हैश करेगी, बिकॉज हैशिंग इज कंबाइनिंग द वैल्यूज ब्लॉक हैश एंड उसको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है विच इज नोन एज बेस 64 स्ट्रिंग. So I know you are gonna get confused in this next code, but this is how it is, right? Hash is very important here. So I'm gonna write a hash function. So I say hash block. वो बोलेंगे कि मतलब मेरे को एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी, तो आई विल से ब्लॉक स्ट्रिंग. उसको बताऊंगा कि मेरे को मतलब जो ब्लॉक जो ऑब्जेक्ट में आएगा उसको मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है. तो हाउ वी डू दैट, वी हैव जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड वी से ब्लॉक, एंड देन उसको मेरे को बेस 64 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डोंट गेट कंफ्यूज यार, आई नो दैट यू आर गोना गेट कंफ्यूज, बट बेस 64 इज जस्ट अ फॉर्मेट. स्ट्रिंगिफाई बफर. बफर इज जब हम लोग कोई चीज रीड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई फाइल रीड करते हैं या कोई भी चीज रीड करते हैं, जब फाइल सिस्टम को एक्सेस करते हैं इन नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट, वी मतलब गेट अ बफर टाइप इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप. तो मैं उसको जो मेरे पास ब्लॉक स्ट्रिंग है उसको बफर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं उसको बेस 64 में जो फॉर्मेट मेरा है जिससे मेरा हैश बनेगा उसमें मैं कर पाऊँ. तो आई एम गोना से block string dot toString. I don't have to say toString, but just for the sake, और इसको base 64 में I'll convert. Now comes the most important part. I'm gonna create a hash. तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर मैंने create hash वाला आप देख सकते हो, सॉरी, create hash वाला फंक्शन जो बनाया है उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि बाय डिफॉल्ट बिटकॉइन यूजेस SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम. So I'm gonna use SHA-256. I'm gonna update the base 64 string and उसको मैं डाइजेस्ट करूंगा. बेसिक डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज अ Node.js code. You can write it in your own language which you are familiar with. This is how you create a hash. This might gonna look complex, but this is what it is. I'm gonna log this hash so you can see how hash looks like. Creating hash. Yeah, yeah. और मैं रिटर्न कर दूंगा इस हैश को. बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन सिर्फ हैश रिटर्न करेगा. So this is how hash looks like, and I know you might get confused in this query, but आपको इसके लिए हैशिंग एल्गोरिदम्स और बफर और base 64 का नॉलेज होना जरूरी है. That I might think you might not have or you might have, but you'll have to learn those stuff online. I am not gonna explain those stuff right now because my focus is to show you how blockchain works. So now जो आपने ऊपर देखा, मैंने कंस्ट्रक्टर में एक न्यू ब्लॉक नाम का फंक्शन बनाया. सो आई एम गोना से न्यू ब्लॉक. मेरा प्रीवियस हैश नल होगा क्योंकि जब मेरा पहला वाला ब्लॉक बनेगा वो बाय डिफॉल्ट नल होगा. कॉन्स्ट दैट इक्वल टू दिस. आई नो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इन जावास्क्रिप्ट इफ यू वांट, मतलब अगर आपको दिस को पॉइंट करना है तो यू कैन स्टोर इट इन अ वेरिएबल. सो आई हैव जस्ट नेम इट दैट. पार्डन माय नेमिंग कन्वेंशंस, बट मेरे लिए ये बहुत सिंपल है तो दैट्स व्हाई. तो अगर मैं बताऊं तो लेट मी थिंक न्यू ब्लॉक में और कौन क्या चीजें होगी. न्यू ब्लॉक में और क्या चीजें होगी.
एक प्रीवियस इंडेक्स, मतलब मेरे को प्रीवियस ब्लॉक को वो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक के अंदर एक प्रॉपर्टी है विच इज नोन एज प्रीवियस ब्लॉक, मतलब प्रीवियस हैश। तो उस प्रीवियस हैश के लिए मेरे को प्रीवियस इंडेक्स को वो करना पड़ेगा, so that's why I'm using previous index. So it's like a linked list where मतलब every block is linked with previous index, but any change will differ the whole blockchain. That's why it's different than linked list. मेरे को एक टाइम स्टैम्प चाहिएगा, तो I'll say const time equal to new date. By default in JavaScript if you say new date, तो वो टाइम स्टैम्प के साथ आपको डेट जनरेट करके देता है, राइट। मैं बोलूंगा प्रीवियस इंडेक्स में कहाँ से लाऊंगा, एक मिनट, सॉरी। तो प्रीवियस इंडेक्स में लाऊंगा दिस। तो इफ कंडीशन ऐसा, आई कैन राइट अ टर्नरी दिस चेन डॉट लेंथ। जो चेन लेंथ है मैं चेक करूंगा, इफ इट्स 0 या इज इक्वल टू 0, तो मैं प्रीवियस इंडेक्स को 0 कर दूंगा, विच इज ऑब्वियस। नहीं तो दिस डॉट चेन डॉट लेंथ -1, नहीं तो प्रीवियस इंडेक्स होगा -1 लेंथ का, राइट। अब मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रीवियस हैश, सो आई एम गोना से प्रीवियस हैश जो है मेरा न्यू ब्लॉक के अंदर जो प्रीवियस हैश आया, जो पैरामीटर ऊपर देख पा रहे हो आप, ये वाला, अगर वो है मेरे पास तो उसी को मैं लूंगा। अगर वो नहीं है तो मैं बोलूंगा प्रीवियस इंडेक्स अगर 0 है, क्योंकि अगर 0 इंडेक्स होगा तो मेरे पास प्रीवियस नहीं होगा। तो अगर 0 है तो I'm gonna say previous hash which is null, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कोई पैरामीटर नहीं भेजेंगे तो वो नल आएगा, so that's why null। एंड नहीं तो हमारा जो हैश वाला फंक्शन है दिस डॉट चेन डॉट प्रीवियस इंडेक्स, सॉरी, हाँ, मतलब जो प्रीवियस इंडेक्स हमने ऊपर कैलकुलेट करा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट अ प्रीवियस हैश, जिसकी वजह से हम इसको प्रीवियस के साथ लिंक कर पाएंगे। तो अब मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा, क्योंकि मेरा फंक्शन बोलता है कि you'll have to create a new block। मेरे पास प्रीवियस हैश है, तो न्यू ब्लॉक के पैरामीटर्स में मेरा फर्स्ट होगा दैट डॉट चेन दिस में, मैंने डॉट दैट वो कर दिया, लेंथ उसका पर +1। स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए नीचे, तो दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिख रहा है? हाँ जी, थैंक यू। हाँ। और मेरा दूसरा पैरामीटर था टाइम स्टैम्प। मेरा तीसरा पैरामीटर क्या है, लेट मी सी। तीसरा पैरामीटर है ट्रांजैक्शंस, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है, करंट ट्रांजैक्शंस। एंड मेरा चौथा पैरामीटर है द प्रीवियस हैश। तो इससे मेरा नया ब्लॉक बन जाएगा। मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे न्यू ब्लॉक कैसे दिखता है। न्यू ब्लॉक, एडेड ब्लॉक। नाउ जब मैं ब्लॉक माइन करूंगा तो यू विल हैव टू थिंक जो करंट ट्रांजेक्शन्स है वो सारे वो ब्लॉक में माइन हो गए। तो अब मेरे को करंट ट्रांजेक्शन्स को, जो करंट ट्रांजेक्शन है उसको एम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीवियस वाले ट्रांजेक्शन थे वो इस ब्लॉक में माइन हो गए जो क्यू में थे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, सेट करंट ट्रांजेक्शन जो मेरा सेटर है इक्वल टू एमटीआर, राइट। दिस माइट आंसर योर क्वेरी मैम, बट आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। और मैं चेन में पुश कर दूंगा करंट ब्लॉक, तो मेरा चेन भी अपडेट हो जाएगा, राइट।
और मैं रिटर्न कर दूंगा इस ब्लॉक को, ताकि ये नया ब्लॉक बन गया। नाउ नाउ अगर मेरे को न्यू ब्लॉक को प्रीवियस हैश भेजना है, तो मेरे पास एबिलिटी होनी चाहिए मेरे ब्लॉकचेन के लास्ट ब्लॉक को, मतलब लास्ट ब्लॉक को गेट करने की। सो दैट्स व्हाई आई एम गोना राइट अ फंक्शन which will do nothing but get a last block of the blockchain. So last block. आई नो कि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा, अगर मैं जल्दी जा रहा हूँ तो इट्स बिकॉज कि मेरे दिमाग में ये सारी चीजें छपी हुई है, और आई हैव बीन क्रिएटिंग ब्लॉकचेन्स फ्रॉम सिंस लॉन्ग, so maybe that's why it's a bit faster, but I'll try to keep this slow. तो लास्ट ब्लॉक कैसे रिटर्न करेंगे हम लोग? अगर उसकी लेंथ 0 है तो हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे, और अगर उसकी लेंथ 0 नहीं है तो हम लोग बोलेंगे दिस डॉट चेन, उसका दिस डॉट चेन डॉट लेंथ -1, -1 मतलब लास्ट ब्लॉक। इट्स एन एरे, तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो लेंथ -1 वो हमेशा लास्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। So this is common sense, but I was explaining this as well. Now I am gonna put a new transaction. Okay, sorry, मैं थोड़ा सा इसको लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेंडर, रिसिपिएंट एंड अमाउंट। राइट नाउ हमारे पास हमारी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं वो करेगी, वो सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन लेगी जिसमें मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होंगे। दैट्स व्हाई आप देख सकते हो सेंडर, रेसिपिएंट एंड अमाउंट। तो मैं न्यू ट्रांजेक्शन में क्या करूंगा, तो जो मेरा करंट ट्रांजेक्शन है, जो मेरी करंट ट्रांजेक्शन की क्यू है, उसमें मैं पुश करूंगा मेरा न्यू ट्रांजेक्शन, जिसमें सेंडर आएगा, रेसिपिएंट अमाउंट और रेसिपिएंट दोनों आएंगे। नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मेरे को की वैल्यू पेयर्स साथ में नहीं लिखनी पड़ेगी। इफ आई से सेंडर, then sender is meant sender equal to sender. That I will explain you later. This is a JavaScript functionality which is not meant to be explained by me, but to get let, मतलब अगर कंफ्यूज हो रहा है तो that's why I'm explaining. और न्यू ट्रांजेक्शन में मैं जस्ट रिटर्न कर दूंगा चेन की लेंथ 0 है तो 1 रिटर्न कर दूंगा, और अगर दिस डॉट चेन, अगर चेन की लेंथ 0 से ज्यादा बड़ी है तो I'll say, sorry, this has to be square brackets. This dot chain dot length -1, और इसे इंडेक्स, मतलब हर चेन की इंडेक्स प्रॉपर्टी होगी +1। एंड इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। सॉरी अबाउट दैट। तो now I know you are gonna have many queries, so I am open for queries if you have any queries here. So but first I will explain every function once again. हैश क्या करेगा, ब्लॉक को हैश करके हम लोगों को दे देगा, ताकि हम प्रीवियस हैश में वो ब्लॉक का हैश असाइन कर पाए। दैट्स व्हाई हैश फंक्शन इज रिटर्न, राइट? न्यू ब्लॉक विल ऐड अ new block to the blockchain, right? So last block will do nothing, but it will return the last block of the blockchain, and new transaction will add a transaction to the transaction queue which is current transactions. तो आपको ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, करंट ट्रांजेक्शन का क्यू, चेन एंड दिस डॉट न्यू ब्लॉक। तो मैं जब कंस्ट्रक्टर को बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक ब्लॉक होगा, राइट? And I'm logging the block here, and these are just getter and setters. Don't confuse in that. These 4 are main functions: hashing a block, creating a new block, accessing the last block, and
adding a transaction to the transaction queue so that it can मतलब वो mine हो पाए next block में, right? So that's how a blockchain works, and that's what the major functionality of blockchain is, right? I'm gonna save this. You can ask any questions if you have any. uh, any questions, ma'am? If someone else, यस यस कंटिन्यू, अभी स्टूडेंट्स की कोई क्वेश्चन है नहीं अभी तक, आप आई थिंक सो सभी को क्लियर है, आप इसको करें कंटिन्यू। ओके, मेरा तो एक क्वेश्चन था, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे थे? सॉरी मैं बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। ये मेरा जावास्क्रिप्ट है, आई एम experienced in JavaScript, तो नहीं, जावास्क्रिप्ट तो प्लेटफॉर्म कौन से पे यूज कर रहे हो? ये right now I'm using VS Code, प्लीज। Visual Studio Code. Yeah. तो यस, इसके बाद थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वो वेब वाला जो था आपका, उस पे भी थोड़ा बताओगे? वेब वाला वेब जो आपने एक और टूल बताया था ना, वेब क्या नाम था उसका? वेब T3 है। मैम Web3 के लिए मेरे को उबंटू चाहिएगा, और मेरे पास अभी पे थोड़ा सा आइडिया दे देना बस, जनरल। हाँ, मैं मतलब कोई प्रोग्राम टाइप करके नहीं दिखाऊंगा, बट मैं ऊपर ऊपर से आपको आइडिया दे दूंगा। हाँ, थोड़ा सा कि हम रन करना चाहे तो रन कर सकते हैं। हाँ, वेब, ओके, सो इफ यू कैन सी दिस, तो इसका स्ट्रक्चर ये जो बना, ये ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर। Now to access this, I need APIs. APIs, matlab, you already might know APIs. You are computer science students, but I will tell you more about APIs. I am using Express because I am experienced more than 4 years in Express. So I am using Express. तो मैंने क्या किया है, वो ब्लॉकचेन वाला जो क्लास है उसका एक इंस्टेंस बनाया है, यू कैन सी दैट हियर, एंड देन उसको गेट करने के लिए मैंने बोला है जस्ट दिस इज नॉट रिलेवेंट टू ब्लॉकचेन, इट्स जस्ट एन एपीआई, बट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। तो जब चेन को गेट करना है मुझे, पूरी की पूरी चेन, तो आई एम सेइंग ब्लॉकचेन डॉट चेन। तो अगर आपने देखा हो तो ब्लॉकचेन में एक गेटर है विच इज चेन, आई एम यूजिंग दैट गेटर हियर, ब्लॉकचेन डॉट चेन, सो दैट्स ऑल। और माइन मीन आई एम माइनिंग अ ब्लॉक। मैंने इधर मैन्युअल माइनिंग रखा है क्योंकि ऑटोमेटिक माइनिंग में मेरा कंप्यूटर मर जाता, तो इसलिए मैंने इसको मैन्युअल माइनिंग रखा है। तो व्हाट आई हैव सीन कि मैंने लास्ट ब्लॉक को एक्सेस किया है, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे को लास्ट ब्लॉक को एक्सेस करके प्रीवियस हैश जनरेट करके, जो हैश फंक्शन हमने बनाया वो न्यू ब्लॉक को प्रोवाइड करना होता है। दैट्स व्हाई मैंने लास्ट ब्लॉक नाम की फंक्शनलिटी बनाई। उसका हैश, जो हम लोगों ने हैश वाली फंक्शनलिटी मैंने आपको बोला था, मेरे को प्रीवियस हैश जनरेट करके न्यू ब्लॉक में एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस फंक्शन, एंड देन आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट बाय response.json ब्लॉक, एंड देन मैंने सारे गेट APIs रखी है टू सिंप्लीफाई दिस। बाय द वे, माइन और ट्रांजेक्शन न्यू को पोस्ट रखना बेटर रहता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव पुट इट गेट, राइट। मैंने बोला कि सेंडर ट्रांजेक्शन में हम लोगों को 3 पैरामीटर चाहिएंगे जो हमको यूजर से मिलेंगे। अगर वो पैरामीटर्स में से एक भी मिसिंग है तो मैंने बोला है कि मिसिंग वैल्यूज, विल हैव टू सेंड मोर वैल्यूज, राइट। एंड अगर वो वैल्यूज है हमारे पास तो आई हैव पास्ड इट टू न्यू ट्रांजेक्शन। न्यू ट्रांजेक्शन कुछ नहीं करेगा, न्यू ट्रांजेक्शन बस इतना चीज करेगा कि हमारी जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन है, जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स की एक क्यू बनाई है मैंने, आप दिखा देता हूँ करंट ट्रांजेक्शन की, उसमें उसको पुश कर देगा, जस्ट यू कैन सी हियर, तो उसको पुश कर देता है, राइट। एंड जब मैं माइन बोलूंगा तो वो ट्रांजेक्शन्स वो हो जाता है,
मतलब वो ट्रांजेक्शन्स माइन हो जाते हैं ब्लॉक के साथ। अगर ट्रांजेक्शन्स नहीं है तो एम्प्टी ब्लॉक माइन होगा। तो आपको ये समझना होगा गेमिंग थियरी ट्रांजेक्शन नहीं होने पे भी सॉल्व होती है, राइट। तो दैट हैज बिन डिसाइडेड कि अगला ब्लॉक माइन करने वाला हमेशा 10 मिनट के बाद माइन करेगा, वो चाहे एम्प्टी ब्लॉक हो, वो चाहे ब्लॉक ट्रांजेक्शन के साथ, राइट। So this is it. I will try to execute it. I might get it fail, but देखते हैं. Okay, right now it's working. So if you can see, तो मेरा फर्स्ट ब्लॉक मैंने बोला बाय डिफॉल्ट मैंने ऐड किया था। आपको दिख रहा हो कि फर्स्ट ब्लॉक कोई भी ब्लॉकचेन पे बाय डिफॉल्ट एडेड होता है, दैट इज नोन एज जेनेसिस ब्लॉक, राइट। तो मैंने बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक ऐड करके रखा था और उसके बाद मैंने चेन प्रिंट की। तो आप चेन देख सकते हो, यू कैन सी द चेन जिसमें ट्रांजेक्शन्स एम्प्टी है क्योंकि ट्रांजेक्शन्स थे नहीं, इट वाज द फर्स्ट ब्लॉक। प्रीवियस हैज नल है क्योंकि प्रीवियस फर्स्ट ब्लॉक का कुछ प्रीवियस नहीं होता। एंड द करंट चेन लुक्स लाइक दिस, उसमें एक ही ब्लॉक है, राइट। नाउ हाउ आई एम गोना एग्जीक्यूट इट, आई एम गोना यूज a tool called postman. It's a very popular tool, you might know this, to call an API. Just for your, ये मैं कर दूंगा, ये मैंने पहले उससे किया था ताकि मैं टेस्ट कर पाऊँ जो मैं कोड लिख रहा हूँ, राइट। तो व्हेन आई से माइन, अगर मैं माइन बोलूंगा तो एक एम्प्टी ब्लॉक माइन हो जाएगा। यू कैन सी द प्रीवियस हैश ऑफ दिस, सॉरी अबाउट दैट। लेट्स फोकस ऑन माइन ओनली। तो एक एम्प्टी ब्लॉक माइन हो जाएगा। जितनी बार मैं माइन बोलूंगा उतनी बार मेरे को नया ब्लॉक मिलेगा, बिकॉज इवन दो वी हैव ट्रांजेक्शन, वी डोंट हैव ट्रांजेक्शन, माइन विल माइन द ब्लॉक्स। और जब मैं चेन गेट करूंगा, यू कैन सी देयर विल बी 4 ब्लॉक्स माइंड, राइट। सो दिस इज आवर चेन। माइन को अभी मैंने बाय डिफॉल्ट वो मतलब इट टॉक्स विद नेटवर्क, बट मेरा सिर्फ लोकल है, तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस लाइक दिस। और उसका स्ट्रक्चर, हर ब्लॉक का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो ब्लॉक का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, इफ यू कैन सी हियर। उसमें इंडेक्स, टाइम स्टैम्प, ट्रांजेक्शन और प्रीवियस हैश हो। तो यू कैन सी इंडेक्स, टाइम स्टैम्प, ट्रांजेक्शन और प्रीवियस हैश, राइट। और वैसे करके मैंने पूरी चेन बना दी है, राइट। और मतलब जब भी मैं माइन करूंगा, सो अभी 4 है, तो दैट विल जनरेट अनदर ब्लॉक 5 with the previous hash of previous block. And if you see chain, now it will show 5 blocks, right. Now transaction में, sorry, transaction में I will create a new transaction. Just give me a minute, मेरे उसका API सिग्नेचर एक बार कॉपी कर लेने दीजिए। और उसके पैरामीटर्स अगर आप देखें तो उसमें पैरामीटर्स में सेंडर, अमाउंट और रेसिपिएंट है, जो अभी हमने नहीं सेंड किया। अगर मैं सेंड करूंगा तो इट विल से मिसिंग वैल्यूज, सॉरी जस्ट a minute, ओके सॉरी। सो query dot sender, I don't know why it's okay. So you can see empty transaction is got mined, but I don't know why this is not executing, but I'll inspect that later. but मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है। तो I will say sender is Yash, amount is 10 and recipient is Harish। तो वो क्यू में ऐड हो जाता है, विच इज 7th ब्लॉक, राइट। जो 6 ब्लॉक है उसमें नहीं, जो नेक्स्ट ब्लॉक होने वाला है तो उसमें ये डाला जाएगा। तो अब अगर आप चेन गेट करोगे तो आपको 6 ही मिलेंगे टोटल, राइट। बट जब आप माइन करोगे
tab you'll see that that transaction is added here, right? So I think I'm not emptying the queue, that's why. Let's just whoa. Just give me a moment. I'm not perfect, sorry. Maybe. And I say send, and then I say mine. So you see that in chain में you will see कि first वाले में कोई transaction नहीं है, second वाले में transaction है. I will add a transaction more जो third block में add होगा. और अब आप chain देखोगे जो mine नहीं हुई है तो आपको third block दिखेगा ही नहीं, पर वो जो mine होने वाला है जब तक गेमिंग थियरी सॉल्व नहीं होती तब तक वो माइन नहीं होगा, वो ट्रांजेक्शन क्यू में रहेगा. तो वो कब माइन होगा? जब गेमिंग थियरी सॉल्व हो जाएगी, ब्लॉक माइन हो जाएगा, तब यू कैन सी दैट द थर्ड index is created and now you can see chain में you can see the third में you can see the transaction. Now I'll change a bit transaction ताकि आपको पता चले. I will say KKK and recipient is LLL. Now this has to be, amount should be 12 and जब I add तो बोलेगा ट्रांजेक्शन एड टू मतलब एडेड टू ब्लॉक 4 एंड अभी तक मैंने माइन नहीं किया है, आप देख सकते हो. और मैं जब सेंड करूंगा मतलब चेन देखूंगा तो यू कैन नेवर सी फोर्थ ब्लॉक. और वो जो ट्रांजेक्शन है वो अभी तक क्यू में है, अभी तक गेमिंग थियरी नहीं सॉल्व हुई है. आप समझ लो कि जब तक गेमिंग थियरी नहीं सॉल्व हुई है तब तक वो ट्रांजेक्शन क्यू में ही रहेगा, वो चाहे 10 मिनट हो, 12 मिनट हो या 15 मिनट हो. और जैसे ही किसने माइंड कर दिया, अभी तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसको मेरे एपीआई कॉल पे रखा है, तब you can see that transaction going through in the fourth block. And when I say fourth block may you can see those transactions. Right, this is the way blockchain works, this is the way gaming theory works, this is the way you can implement your blockchain. I know you want to implement one of your blockchain, so I'm gonna give you this code base and I'm gonna give you this code base, this code's access, so you can create your own blockchain and maybe come up with new solutions you can create with new languages as well. But if you have doubts in this query or uh, in this whole lecture, then you can tell me and you can ask those questions now. I know this has been a lengthy a seminar or day. I will I will try to keep the questions as short as possible. So please ask questions. So I am done with my seminar, but I will explain the Web3 as Savita ma'am has asked. So I know I'm not gonna go through those all documentation, but I'll try to I'll try to answer as many questions as possible. I will go through Web3 documentation. Okay. So when you want to connect your application with the blockchain you have maybe running on your local, maybe running on like you want to connect to a public network, you want to connect to a test network, तो आप क्या कर सकते हैं, आप Web3 का यूज कर सकते हैं. You'll have to set provider. आप set provider करके इसमें आप you can give the ये URL of that block or sorry that chain. जैसे मेरी ये chain running है in my local, इसका URL आप देख सकते हो 7545. So यहाँ पे 8545 की जगह मैं 7545 कर दूंगा and you can provide that HTTP provider to your Web3 or to your web application, and इसी से आप then you can access this Web3 to deploy the contracts, to
get the balance of the contract, or you to get balance of any account, you want to create an account, you can do that as well. You have methods for that. So if you can see in web3.eth, you will have get balance function to get balance of your address or anyone's address. You can get balance of any account address जो ethers में रहेगा mostly. You can get the block number, जो latest block है उसका block number. You can get pending transaction, as ma'am was asking the other day, how लाइक जब तक ब्लॉक माइन नहीं हुआ तो पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स को वो अल्टर करके डाल सकता है, बट वो पेंडिंग ट्रांजेक्शन हर किसी के उसमें होते हैं, हर किसी को एक्सेसिबल होते हैं. सो इसीलिए वो अल्टर नहीं कर सकता, बिकॉज देन अदर्स कैन से कि वो पेंडिंग ट्रांजेक्शन में था ही नहीं तो तुमने डाला कैसे, बिकॉज सबका हैश अलग होता है. सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन कॉन्ट्रैक्ट. You just have to set the provider, which is ये वाला link, RPC server वाला link और your nodes link, and you can call the contract. और जब new contract करके आप करते हो तब वो deploy हो जाता है, and you can call the methods of that contract जो मैंने आपको दिखाया remix में. जैसे मेरे को ये test.sol में refill कॉल करना है, तो if you are connected, your contract is connected through your web app, तो you can say contract को आप उसमें स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में, and contract dot methods dot that function dot send, और जो पैरामीटर्स होंगे वो, right? This is the way it got connected to your web application. And you can start hands-on on web3 by reading this documentation. एंड मतलब बहुत ही एकदम सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, तो यू कैन स्टार्ट बाय गेटिंग स्टार्टेड, एंड यू विल हैव योर ओन डी एप्लीकेशन. I think that will solve some of your doubts. I cannot solve all the doubts, as web3 itself is a very huge topic to cover. So, and web3 is in another languages also. You can find your solution, and you'll free to connect. This is a freeware, so it's an open source package. So in any language you can try this. So that's about it, guys. I think I am done from my side. I will put a link to my GitHub of the blockchain I created, and I will also like if you can give me some stars. That just kidding. If you want to, you can, but if you want the solution, I will provide you. So that's it from my side, ma'am and other people. Thank you for bearing with me. Ma'am, hello. Hello, Am I, Hanji. Yes. yeah, am I audible? Yes, you are audible. Yes. Hello, Hanji. Yes. हाँ, मेरा कंप्लीट हो चुका है. That's what I'm saying. You can ask questions, right? I think I'm open for questions. Anyone have any questions? Then yes. Yeah, then I'll forward to Abhishek. Abhishek will move forward with this. So can you please have your questions ready? So the current Anybody is having question, please raise your hand or you type your question, please. Before that, I am putting a link to the project which I created. It may be somewhat different, but this was created on the go. So I have already one solution running. You can go through this and you can ask questions, or you can have your doubts solved by the GitHub as well.
So I'm putting one link and you can go through this. Please give me stars if you want, but that's a marketing which I'm doing. I'm sorry about that, but one has to. Thank No you. problem, yes, it's most welcome, not a issue. Mm. This is the, so you blockchain which you have already developed. Yeah, this is All the right, yes. most simplest solution right now. You can have much complex solutions online, or you can try your own blockchain. Gayatri and Sital Suraj are having any query, Gayatri? You can unmute Gayatri yourself if you are having query. Are you here? So I think so nobody is having any query. Sital, you are having query? Okay. So Um, hand over to Umesh. no, before that, I will hand over my my mic to this. I don't have a mic, but Abhishek will move forward with the other part. Just give us 5 minutes. Okay. Yes. Yeah. Okay, yes, continue, Abhishek. Abhishek, am I audible? If you can hear me, Yes. yeah, you can start. Okay. I'll just take 5 minutes of yours. Again, just to remind you all about this Wise Potatoes and what work we do. Basically, we are just bridging the gap between college students and industry. We feel that there are courses out there which have good potential, but students are not able to implement the concepts, right? So we are working on it, and we are helping students to actually work in the industry and make a way out in their career. So as I explained to you that day, we provide courses. We have top courses with experienced faculties, and also you in the past 5 days you guys have also seen what level of teaching or what level of mentoring we guys do uh, as uh, as we are handling or teaching advanced concepts or courses in this industry. Also, we as named, we have, other than Python, machine learning, and blockchain, which are the major courses we offer, we also have courses in the field of full stack development, such as AngularJS, Node.js, React.js. Again, as I said, these courses are not specific to only theory. We go in depth of the concept, and as well as we take up the coding part. Also, you will be creating lots of assignments, lots of small projects, lots of caption projects, and you will get a good hands-on if you guys are interested in. So if you are interested, you can put down the queries. I will share the WhatsApp number and the call number once again. And also, if you have any queries like related to courses, if you have any what we can say doubts, if you have any doubts regarding the concepts, you can always reach out to us. Feel free to reach out to us, and we'll get back to you. We also organize this workshops, seminars, as we have done in your colleges. We also provide short courses for schools and colleges, so that is for K-12. So you can try using this. Also, I would ask everyone to put down the feedback for these sessions. The 5 sessions will you can put. I will provide the feedback link in the chat. Please take for it will take or at least 2 minutes. Okay, at most it can take 5 minutes for you to fill the feedback form, but it would be great from our side if you help us to improve and give us feedback of our work we do. And also, I have put in the contact numbers. Feel free to contact us. That was from my side. And also, if you guys love this session, just take us to LinkedIn and tag me, yes sir, and Harish sir, and just encourage us for doing the work we do. Thank you, everyone. Yes, I want to ask one thing. You just put this one link on the or WhatsApp group which we have created. On that also you can put, because after this session finish, this Zoom link will not be there, but they can feedback on using the WhatsApp group which we have already created. It will be there only. Yes. Ma'am, I don't use WhatsApp, but Abhishek, can you I'm put this asking in? Abhishek, you can put. Yes, I will put down the link in the WhatsApp group as well. Yeah. So that the students can fill it in. Yeah.
Also, Harish, can you unmute Harish sir, please? He wants to say something. Harish is, yeah. Harish is there? Sir, I already provided him course priority. I think he is unmute now. You can speak, Harish. Yes, yes. Thank you, Abhishek, for giving such a. Thank you, Yash, for giving such a wonderful session. And Savita ma'am, I will just put all those links in WhatsApp. And if you have any queries regarding course, you can just call on 7972 or you can WhatsApp me. I will be there to share those details. Or you can also reach out to Dr. Savita ma'am for more information also. Surely you can contact us. We will contact through me also, and through WhatsApp group also we can contact with Harish, and any kind of query we will be continue. Many more things we will continue in the department. Don't worry about that. And now I think so. Harish, anything else you want to say? I think we are done from our side. Okay. So hand over to Umesh or Kirti. I think so. They are there, or I think so. Sudhir is also there. Okay, this week was amazing for all of us as we had you, Yash Wagwani and Abhishek sir here among us, and the department and the knowledge you give them about these technologies. And of course, because of these students will now walk into their corporate lives, your tips are going to be very useful to them. Thank you for being here. And today's session summarizes about walkthrough of Remix tool and creating smart contract using Solidity code, and also the contracts which contains storage, owner, wallet. Also the Ganache which was downloaded by sir, and also how to create a blockchain and blocks and all the coding and using of Postman and Web3. So thank you, sir. And dear participants, thank you for attending the workshop. Our primary goal was to increase the understanding of the trending technologies, and we will be very grateful if you share your ideas with us. Thank you, ma'am, and I'll head over to you. Yes, Kirti or Sudhir, maybe hand over to Sudhir. Okay, Sudhir, sir. I'm requesting to everyone, please contact, join the group as soon as the students not joining, ask their friend to join. Now we are going to be hand over to Sudhir. He will proceed this further. हेलो एवरीबॉडी, हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्स्ट डे हमने डिसाइड किया था कि देयर विल बी ए क्विज ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 डेज। तो जो लिंक है वो अभी जूम के चैट बॉक्स में ही लिंक शेयर किया जाएगा आपके पास। 1 मिनट होल्ड करना बच्चों। हाँ जी, तो जूम के ही जो चैट बॉक्स है उसमें आपके पास लिंक शेयर करेंगे। आपको बता दिया जाता है पहले ही कि अच्छा, उसके लिए आपके पास टाइम 30 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपके पास टाइम होगा सिर्फ 16 मिनट। 1 मिनट आपका जो है नाम वगैरह जो फॉर्मेलिटीज हैं वो फिल करने के लिए हैं। तो विद इन 16 मिनट इंश्योर करें कि आपने सबमिट कर देना है फॉर्म। अदरवाइज 16 मिनट के बाद 1 सेकंड भी ऊपर होता है तो अपने आप डिसेबल हो जाएगा फॉर्म। तो कोशिश करें आप 16 मिनट से पहले पहले ही उसको सबमिट करें। सारे पहले बच्चों को ना बोलो कि वो ज्वाइन कर ले टेस्ट होने से पहले, कुछ बच्चे का नहीं है। तो जो भी आपके जितने पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं
उनके पास में ये जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनको आप सूचित कर दीजिए कि विद इन नेक्स्ट 2 मिनट हम लिंक शेयर कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली यू समझिए कि 12:35 पर आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा और जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उस टेस्ट में उनको अलग से अप्रिशिएट किया जाएगा जी। तो आप तैयार रहें। अभी मैं आपके पास जो अपना चैट बॉक्स है जूम का ही, इंश्योर करें कि हम व्हाट्सएप वगैरह पे उस लिंक को सेंड नहीं करेंगे। आपको यहीं पे जितने बच्चे इस वर्कशॉप में लाइव अटेंड कर रहे हैं वर्कशॉप को, उन्हीं को वो लिंक विजिबल होगा। और मैं अभी आपको लिंक शेयर कर देता हूं। आप लोग अपना जूम का जो चैट बॉक्स है वो ओपन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं जी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन टाइम लिमिट है उसमें, 16 मिनट लास्ट है। चलिए, गूगल फॉर्म है और ये आप टाइम नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों ने जो है सेशन को आउट लीव नहीं करना है, जूम मीटिंग को बने रहना है। आपके इस क्विज टेस्ट के बाद तुरंत हमारा आज का जो वैलिडेटरी सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूं अभी। तो 12:50 तक आप लोगों ने सबमिट कर देना है। You can see the link of the test in Zoom chat box. 1 minute, sir. Take 1 minute more because students are joining. 51 is there. 1 minute और आप ले सकते हैं कि ask the student to join. Sudhir, sorry for interrupting. इसमें नेटवर्क गेट से कनेक्टेड है, आईजीयू से नहीं। नेटवर्क गेट से कनेक्टेड है, आईजीयू से Sudhir, you can start now. I think so. I don't think other more students will join. 12:52 तक आपने सबमिट करना है बच्चों। बीच में पोस्ट कर रहे हैं 12:50 तक। हाँ हाँ जी, 12:52 तक आपने सबमिट करना है। प्लीज यू मे प्रोसीड। और हम लोग लॉग आउट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट म्यूटिंग आवरसेल्फ सो दैट आप डिस्टर्ब ना हो। This session will continue. You can answer your questions also.
Savita ji, if I am audible to you? तो आवाज आई? हाँ सुधीर जी, विजिबल तो है। 1 मिनट में सिस्टम से कनेक्ट कर रही हूँ। ओके मैम। Io ti direi perché dentro non guardi, la sbagliare. Ogni volta che hai già. सुधीर जी, अपना पर्सनल अगर उसी नेटवर्क से कर ले तो ज्यादा ठीक है। यहाँ तो दैट विल नॉट वर्क। सुधीर जी, अगर मेरी आवाज आ रही है आप तक तो काइंडली ज्वाइन विद योर पर्सनल नेटवर्क। अभी आ रही है आवाज, है ना? आवाज आपकी थोड़ी सी कट रही है। बस वैसे आपकी आ रही है मैम, कट कट के आ रही है। मतलब कोई नेटवर्क का ही बड़ा इशू लग रहा है। इशू है। ये मैंने अपने पर्सनल उससे चलाया है। अगर आपको दिक्कत होती है तो यू कैन ज्वाइन। सविता जी, अगर मेरी आवाज आ रही है, कैन नॉट अटेंड योर कॉल। आप एक बार ऐसे में तो मैम कैसे होगा? सुधीर जी, आप इधर लैब में मेरे सिस्टम पे कर लीजिए। मैं अपना पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन किया है, तो आई थिंक मेरी आवाज आप तक क्लियर। नहीं मैम, आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। वो आपके नेटवर्क का इश्यू है। उमेश, काइंडली चेक फ्रॉम योर पर्सनल नेटवर्क। आपके पास आ रही है मैडम? क्या है वो ऑडिबल प्रॉपरली? यस मैम, आपकी आवाज सही आ रही है। आपके नेटवर्क का इश्यू है, तो आप काइंडली यहाँ शिफ्ट कर जाएं मेरे पास। अभी मैम आ रही है आवाज? नहीं सुधीर जी, आपका रेड मार्क हो रहा है। रेड मार्क हो रहा है, आपका सिग्नल ना क्लियर नहीं है। यहाँ आईसी का नेटवर्क इज नॉट वर्किंग। आप या तो पर्सनल नेटवर्क चेक कीजिए, और पर्सनल भी तो आप मेरे यहाँ पे शिफ्ट कर जाइए। पर्सनल नेटवर्क इज वर्किंग। चलो मैम, फिर मैं उधर ही आता हूँ। जी सर, बेटर रहेगा। प्लीज सर।
Students, we have to wait for 2 to 4 minutes till the Sudhir sir joined us. So I think you attempt your test properly. दूसरे को ये अब ये अब ऑन है। अच्छा बोल ठीक है, शुरू करते हैं। फोन अटेंड बिल्कुल मत करना किसी को। हाँ जी, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, यस सर, क्लियर है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हैव यू सबमिटेड द क्विज? गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया आप सबने? चलिए, उम्मीद है आप सबने क्विज सबमिट कर दी होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा क्विज को। चलिए, थोड़ा सा ये नेटवर्क का इश्यू था बीच में, अभी रिजोल्व हो गया है। अभी मैं आगे की जो प्रोसेस है उसमें हमारे जो इस 5 दिवसीय वर्क सत्येंद्र बल गुप्ता जी हैं, जो हमारे को-कोऑर्डिनेटर हैं आज ये जो वर्कशॉप है, तो मैं आप इनवाइट करना चाहता हूं कि एक बार ब्रीफ करें, क्योंकि कई जो डिग्नेटरीज आज हमारे साथ वर्कशॉप में जुड़े हैं, तो एक बार थोड़ा ओवरव्यू सबको पता लग जाए कि हमने 5 दिन तक
इस वर्कशॉप में किन किन टेक्नोलॉजीज पे और किन किन एस्पेक्ट्स पे बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी को साझा किया। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बुलाना चाहता हूं हमारे इस वर्कशॉप के को कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर सतेंद्र बल गुप्ता जी। प्लीज सर। Thank you, Sudhir. Very good afternoon to one and all. First of all, we are thankful to Honorable Vice Chancellor, sir, and worthy Registrar, sir, for giving us the opportunity to conduct this workshop. Further, I want to thank Professor Savita Sharan for giving me the responsibility of presenting the report of this 5-day workshop on disruptive technologies. The day one started with the blessings from Honorable Vice Chancellor sir and worthy registrars sir with their motivating messages. Professor R.K. Agarwal, NIT Kurukshetra, was the keynote speaker. He gave presentation on the disruptive technologies to improve using Ayurveda. On the technical side, Mr. Abhishek gave the presentation on ML, that is machine learning, data science, and how to implement these using Python. The day two started with the technical session by Mr. Abhishek. He gave presentation on algorithms used in machine learning, types of learning, and real life applications of machine learning. The day three started with the technical session by Mr. Yash Kumar Vaghwani. He gave presentation on basics of blockchain, its characteristics, working, types of blockchain, and why we use blockchain. The day four started with the technical session by Mr. Yash Kumar Vaghwani, and he gave presentation on cryptography, types of cryptography, its role in blockchain, digital signatures, etc. Today, that is the last day, that is day 5, started with the technical session by Mr. Yash Kumar Vaghwani. In today's technical session, he showed practically how to create and implement your own blockchain using Solidity and also using JavaScript. So this is all about the technical sessions in last 5 days. Now I want to thank Professor Mank Dave, Department of CSC, NIT Kurukshetra, for accepting our invitation to be the chief guest on the closing ceremony of this workshop. Last but not the least, we are thankful to all the deans, faculty members of IGU, and research scholars of CSC department for their constant support for successfully conducting this workshop. Thank you. I'm handing over this session to Mr. Sudhir for further. Thank you. Thank you, sir, for briefing the overall workshop. देखिए बहुत ही सीमित शब्दों में सर ने 5 दिन का जो हमारा वर्क था उसे बहुत ही सलीके से और तरीके से आप लोगों के बीच में रखा। मैं एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी क्रम में हमारे साथ जनरली तो सारे बच्चे ही बहुत सिंसियरिटी से जुड़े रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे हैं, देखिए किसी ने कहा था कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। तो बच्चे तो और भी सारे अच्छे थे, सबने अच्छा काम किया, लेकिन स्पेशली कुछ बच्चे हैं जैसे उमेश है और नितिन है और कीर्ति हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं यहाँ पे। तो ये कुछ एक मोमेंट्स होते हैं जब बाकी के लोग बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल, वो परिस्थिति किसी एक बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है टू प्रूव देयर सेल्फ। तो इन बच्चों ने अपने को प्रूव भी किया है। पार्टिसिपेंट्स ने, हमारे एमसी स्टूडेंट है सपना,
जो बहुत ही सिंसियरिटी से 5 दिन तक इस वर्कशॉप में बनी रही हैं, और गायत्री हमारी रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन जिन्होंने किया है। तो मैं चाहूंगा एक बार, चाहे आप घर बैठे ही एक बार क्लैप करें इन बच्चों के लिए, इन के लिए जिन्होंने इस वर्कशॉप को सफल बनाने के लिए ना केवल अपना समय बल्कि अपना मन भी इस वर्कशॉप को दिया है। ऐसे ही बच्चों, जब आप इतने मन से वर्कशॉप वगैरह जो हमारे प्रयास होते हैं उनमें जुड़ते हैं, तो उससे फर्क ये पड़ता है कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करने में हमें बल मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे बच्चे इस चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी क्रम में मैं, अगर बिटिया सपना मौजूद है तो मैं चाहूंगा वो सपना, सपना है हमारे एमसीए के स्टूडेंट हैं। यस सर, हाँ जी। सब सपना को मैं हमारी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, सपना को एक बार अलाउ करेंगे। तो बिटिया प्लीज आप भी अपना जो एक्सपीरियंस रखें इस वर्कशॉप के बारे में, और आप चाहे वो सिंबॉलिक क्लैप कर सकते हो गुड़िया के लिए। मैं इनवाइट करता हूं हमारी सिंसियर पार्टिसिपेंट मिस सपना फ्रॉम एमसीए सेकंड ईयर। वेलकम बेटा। Hello, Dr. Sir, this opportunity. This workshop really expanded my understanding of less and give me great understanding of the topics like machine learning, AI, and blockchain. It was very informative and excellent workshop. Learned a lot and this workshop inspired me a lot. Thank you so much for the opportunity. Have a nice day. Over to you, Sudhir sir. थैंक यू बिटिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपने भी अपना, हालांकि टेक्निकल इश्यूज था, आपकी वॉइस थोड़ा क्लियर थी, लेकिन चलिए आप आए और अपने थॉट शेयर किए, इसके लिए हाँ जी। तो सपना का भी थैंक यू वेरी मच बेटा। और प्रोफेसर डॉक्टर मंजू परूथी जी भी हमारे वर्कशॉप में जुड़ी हुई हैं। उनका भी मैं पूरे हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनकी तरफ से थैंक्स बोलना चाहूंगा कि बहुत ही, जब देखिए बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेंट एज ए सिंसियर पार्टिसिपेंट की तरह ऐड होते हैं तो वो तो अच्छी बात है ही है, लेकिन जब आदरणीय डॉक्टर मंजू परूथी जैसे हस्ताक्षर भी हमारे इस वर्कशॉप में एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह पूरा वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो ये हमारे लिए और भी प्राउड की बात बन जाती है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ मैं मैडम, हमारे आदरणीय मैडम मंजू परूथी जी को भी इनवाइट करता हूं कि वो अपने वैल्यूएबल थॉट इस वर्कशॉप पे हमारे लिए प्रेजेंट करें ताकि हमें आगे भी इस तरह के आयोजन करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर मंजू परूथी जी, वेलकम मैम। Thank you, Sudhir, for giving me the this is again
मंजू मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? यू आर नॉट ऑडिबल। सुधीर सर आपकी तो आ रही है आवाज। मंजू मैम को को होस्ट बना रखा है ना योगेश जी? जी मैम। Manju ma'am, kindly switch on your video as well as the audio. Savita ma'am, if my voice is clear to you, kindly call Professor Manju ma'am. What's the issue? मैं भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही मैम। आप तब तक उनको बड़े सर को बुला लो, उसके बाद मंजू मैम को बुला लेना या तो। जी जी ठीक है। Okay, there is some sort of network issue. तो then meanwhile हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए प्राउड फील कर रहा हूँ कि उन्होंने एक अपना इनिशिएटिव, एक अपना वर्क स्टार्ट किया है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टार्ट की है। हमारे बीटेक एक स्टूडेंट है मिस्टर प्रीतम, अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। मिस्टर प्रीतम हमारे फाइनल ईयर बीटेक के स्टूडेंट हैं। मिस्टर प्रीतम जिन्होंने एक अपना खुद का सेटअप स्टार्ट किया है, एक तरीके से जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है सोसाइटी के लिए। मैं चाहता हूं कि वो भी आ जाएं और अपने थॉट्स शेयर करें इस वर्कशॉप के लिए, अगर प्रीतम मुझे सुन पा रहे हैं तो। और प्रीतम के साथ, हाँ जी प्रीतम हैं, हमारे साथ हैं। हाय, हेलो हेलो सर। हाँ जी, पहले Good तो afternoon, प्रीतम के everyone. लिए भी आप लोग Am I audible? क्लैप कीजिए। हाँ जी प्रीतम, यू आर ऑडिबल। Thank you, sir, for giving me chance to represent myself. So, please make your video I'm- on also. yeah. Pritam, make your video on. Yes, Pritam, welcome. And you now you may start. Thank you, sir. So, myself, Nikhil Sharma, I'm student of Department of Computer Science BTech final year. So, currently I started my own startup named Professional Quest. And currently we are developing some offline payment methods. And this seminar helped me a lot for that. So I have to implement the wallet implementation and for that. तब शशांक के बाद वो रजिस्ट्रार सर जुड़ गए, मैंने नहीं आएंगे, काट दूं मैं सीधे ऑनलाइन है ऑनलाइन है।
प्रीतम आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ योर विजिबल बेटा, आवाज नहीं आ रही लेकिन। नहीं आवाज नहीं आ पा रही बेटे, विजिबल हैं आप। हेलो मैम, अभी अभी आवाज आ रही है? आई थिंक एनीवन कैन रिस्पॉन्ड इफ आई एम ऑडिबल? नहीं, now you are audible. You may proceed. ओके सो अभी मैंने एक अपना स्टार्टअप किया है, जैसे प्रोफेशनल क्वेस्ट मैंने अभी अपनी कंपनी रजिस्टर किया है। सो अभी मेनली हम फोकस कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो करंटली हमारे कुछ सेल्फ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हम अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं, लाइक ऑफलाइन पेमेंट, जो कि मैं अभी ऑलरेडी आई थिंक सबमिट भी करने वाला हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस में। सो एक अभी हमारे पास ऑफलाइन मेथड्स नहीं है पेमेंट के, लाइक एक यूएसएसडी पेमेंट हमारे पास है जो हम पेमेंट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम अनदर एप्लीकेशन बना रहे हैं, लाइक गूगल पे, फोन पे, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलेगा। सो इसके लिए मुझे ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन का काफी जरूरत था, वॉलेट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो ये सेमिनार ने सच में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर वर्क भी कर रहा था, तो कुछ अच्छी चीजें भी मुझे लगी हैं इसमें। इसके अलावा अगर मैं वैसे देखूं तो अभी मशीन लर्निंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और फ्यूचर के लिए सभी को सीखना चाहिए। सो सेमिनार में जो भी हमें सीखने को मिला है वो सच में आई थिंक अगर हम बाहर कहीं पे ये सेमिनार अटेंड करते तो नॉर्मली 2 to 3,000 कॉस्ट वो करते हमसे। सो हमें यहाँ पे हमारे सर ने, हमारे एचओडी सर ने, हमारे सतेंद्र बल सर ने, सविता मैम ने, रीना हुडा मैम ने, जिन्होंने भी ये मतलब सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराया, तो हमारे लिए एक सच में बहुत बेनिफिशियरी रहा है ये। सो सेशन अटेंड करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था, बट फिर भी हम टाइम निकाल देते, क्योंकि हमें एक दिन जब हमने अटेंड किया तो उसके बाद अगले दिन हमें खुद से अटेंड करने के लिए खुद से बार बार हम देख रहे थे अभी तक मीटिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है, अभी तक सेशन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। तो आई लव इट। थैंक यू। Thank you Preetam for sharing your thoughts, and really such kind of thoughts motivate us कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि बाहर आप चाहते तो सेम के लिए आपको 2 to 3,000 you have to spend. Yes sir. But that will be available for you at free of cost. Thank you Preetam. Now one more student, that is Mr. Shashank Mehndiratta. Is he listening me? Shashank Mehndiratta, are you listening me? He is one of also since a student of our campus. So I would like to invite Mr. Shashank Mehndiratta. Good morning, sir. Yes, Shashank. How are you, Shashank? Sir, I'm great. I was also with Preetam here, and we were taking this seminar together. इससे पहले कि शशांक शुरू करे, मुझे याद आता है एक दिन कि हमारे यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक पीपीटी कंपटीशन हुआ था, और मेरे पास एक दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि आपके भी डिपार्टमेंट से कोई स्टूडेंट हैं तो बताएं। और इस बहुत छोटे से नोटिस पे सिर्फ 2 स्टूडेंट थे, एक अरुण रोहल और दूसरे शशांक मेहंदीरत्ता, जिन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली मेरे को कहा यस सर वी आर रेडी। और ना केवल रेडी बल्कि इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी, स्पेशली जो रश्मि पुंडिर मैम है, हमारे एचओडी हैं डॉक्टर रश्मि पुंडिर, उन्होंने स्पेशली मुझे बताया कि आपके डिपार्टमेंट के बच्चे ने ऑसम प्रेजेंटेशन दिया। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे, और इसीलिए शायद बच्चों के अंदर जो गट्स हैं, इसीलिए शायद वर्कशॉप के अंदर इन्हें उन बच्चों में चयनित किया गया है जो अपना फीडबैक दें। भविष्य के लिए भी शशांक मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ हैं। इसी तरीके से लाइफ के हर फील्ड में आप अच्छा करते रहें। अब मैं चाहता हूं जो वर्कशॉप का प्रयास हमने किया उसके लिए भी आप एक 2 मिनट का फीडबैक दें। ओवर टू शशांक। Yes, sir. So currently, I got a job, I think 5 to 6 months ago, and I also started a startup. Its name is Accord Innovation. It's basically a digital marketing firm. We have multiple clients, so I'm doing well in that field also. And
this topic was this topic was very important for me because I was considering looking into it for security measures because our websites and everything, all those encryption and decryptions were related to this. And after this presentation, I have a much clear notice of how stuff work. All I was thinking during this presentation was why did it stop after 5 days? I wanted to know more about this, and the way sir explained about each and every questions and topic was very great. And when we have any doubts, he explained it until the end, even if it took more than the time that was required for the presentation. And I like that about this presentation. Thank you, sir, for giving us this opportunity to learn from you. And we pretty much respect you very much for that. Thank you. Thank you, Shashank. Thank you for sharing your thoughts with us. Thank you. Yes, sir. एंड जैसा कि थोड़ा सा बस ये है कि हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो समय का थोड़ा सा विलंब है, समय की सीमा है, अन्यथा 5-6 बच्चे और हमारे इस वर्कशॉप सेशन में ऐसे थे जिनके मैं चाहता था कि वो भी अपने थॉट शेयर करें, लेकिन क्योंकि समय की सीमा है इसलिए ज्यादा डिले ना करते हुए मैं हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, बच्चों आप चैट बॉक्स में तालियां बजाकर उनका स्वागत कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े सीनियर आर्किटेक्ट हैं जो ग्रॉस वेन्योर सिस्टम लिमिटेड लंदन बेस्ड एक कंपनी है जिनके अंदर वहां पे सीनियर डिजाइन आर्किटेक्ट के पद पर कार्यरत हैं। क्योंकि वहां सुबह के 7-7:30 बजे हैं तो मैं मैडम को बोलूंगा गुड मॉर्निंग मैम, और आपने समय निकालकर आज के वर्कशॉप को यादगार बनाने के लिए आपने इस वर्कशॉप में शिरकत की। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, हमारे पूरे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप भी अपने वैल्यूएबल थॉट्स प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ इस वर्कशॉप में जुड़े। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक बहुत ही रेप्यूटेड सा नाम होता है टॉगेफ, जो होता है द ओपन ग्रुप आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क। वो अपना एक सर्टिफिकेशन देता है, तो वो हर किसी को यूं ही नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो टॉगेफ सर्टिफाइड सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्ट हैं। तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक ऐसे प्रतिभा के धनी, व्यक्तित्व के धनी हमारे साथ इस वर्कशॉप में जुड़े हैं। मैं सभी बच्चों के तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर मिस मीनाक्षी, आप आए और आप भी हमारे बच्चों को ब्लेस करें, अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि इस वर्कशॉप का एक सिंगल मोटो जो है, हम हमारे बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन की फीलिंग जनरेट कर सकें, उसमें हम कामयाब हो सकें। तो मैं बहुत ही सादर अभिनंदन और स्वागत के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस मीनाक्षी जी, प्लीज मैम। Hello, thank you, sir. Thank you so much for your kind words. I would like to start with wishing this whole committee that they have organized such a successful workshop. And I would like to especially thank all the respected professors and especially Dr. Savita and Dr. Reena Dhaka, who actually considered my industry experience worth sharing here. And I hope that I would give some sort of technical insights into this workshop, and perhaps that should help some students to learn where the technology is going, and in the real world, in the business world, how the technology is helping solving business problems. And Dr. Reena mentioned to me that it is Disruptive Technologies workshop. So I would like to thank this committee that they have organized such a successful workshop, and it is so helpful for students specifically because it helps them immensely to see that there's a difference between what we read at academic level in our course and syllabus, and there's another thing that goes parallel, the innovations that go and help and change the technology world. So
in this topic of disruptive technologies, I would like to mention cloud computing. That is something that I would say disruptive technologies topic would be really really incomplete if we don't mention cloud computing and microservices. So before I start, I would anyway, you already presented me that I'm working in London here, so I'll just give a bit of more background so that I can relate to the students here. So my background is from India. I moved to London in 2007. So I have graduated from All India Jat Heroes AIHM Rohtak. I did BCA from there in 2002. And then I graduated, did my master's from MCA department, University Rohtak. And I was a batchmate of Dr. Reena. So thank you so much for giving that sort of opportunity to me. So yeah, regarding cloud computing, if you see that what the businesses need today is that the global need of expansion, and this expansion comes with has to be sort of the need for that. The motivation for this expansion is that it needs agility. When we say agility means you can expand the things, you can scale the things to serve your business needs. And that's where my role fits in these learning companies, where I help clients that where you can automate, how you can automate, and if they have already some system set up, then how we can scale that so that it serves their business need. So business means profit. Profit comes with more customers, wide customers, more transactions. So what happens these days is that the traditional technologies we have been using, they sometimes become a bottleneck that if there are more customers doing online shopping, the website might crash because existing servers are not able to support that sort of traffic. Then, for example, we have been discussing in this workshop big data, machine learning, and they need powerful, these algorithms to run, they need very, very powerful infrastructure. So not every business, they cannot afford that sort of infrastructure, that sort of data centers. So cloud computing has given all these especially the startups at because all the infrastructure come with cost, and startups are generally sort of restricted on budget. So cloud computing is something that would definitely help the small organizations, medium organizations, as well as big organizations in different areas to scale out their business. Now, cloud computing is not just the servers and data center. It is more than that. Some of you might have heard that word that is very a common buzzword in the technology today, elasticity. So, we take an elastic and we can stretch it according to the dress size. Similarly, cloud provides that elasticity when it comes to the storage power, server power, compute power, and that sort of elasticity is a must in this agile world. Agile means that it is changing world. Today you are setting up a website. Tomorrow you get more customers on it, and slowly you don't see it coming that, oh wow, my business is booming, and now I need more resources for that. We all know the Netflix name, for example. So the Netflix business was a very small business with 30 employees back in 2008, and suddenly something went wrong with their data center, and the whole Netflix crashed, and for 3 days nobody was able to order a new shipment because they used to ship these movie CDs. And at that point, they took a decision that, okay, why not we should consider, instead of fixing our data center, why shouldn't we consider taking this cloud computing opportunity? And then they went to AWS, Amazon Web Services. Amazon has already changed the world with their online shopping, especially during this Corona time.
but this AWS is another thing that is very buzzword these days. I would like to share this with students specifically, that AWS provides a lot of certifications for different levels, for freshers with some experience, middleweight developers, testers. They have something for everybody who works in IT, and especially the students who will be graduating really soon. It would be very helpful for them to take an opportunity, just look around what AWS is, and try to, if they can, try to get a foundation certificate, and that would definitely help them in fetching jobs and clearing interviews when they graduate from the university. And the other thing that I would like to mention is that I joined this workshop, and there was two students who were mentioning that they have started startups in this area, and I would like to really praise them for this effort. It takes really a really strength to, you just graduated and you have a strength to go to that. Okay, no, I'm not going to be an employee, I'm going to give employment. So just too well done for them. And when I say this cloud computing, this can definitely help such startups as well, because especially in India, technology is changing the face of India. So the government websites, everything is online these days. And I recently visited India, and I worked from home for 2 days, and the network was so good. I didn't expect that, because till few years back, we would struggle to even give a Skype call to my parents. And I saw that India is changing day by day, and not just changing, progressing day by day and multiple times. So definitely this sort of startups would help small businesses to set up their online business. And if they have already an online business, these startups can help them to translate their new needs, because of the online boom that has got. So a lot of businesses, mostly small businesses, would struggle to cope with this sort of speed that technology is going ahead. So these startups would definitely be helpful, not just giving employment to the society, but actually giving back to society their worth, the technology they have learned through their education. And it's too great they are doing. So I would like to finish with another term that we listen these days, is microservices. At this stage, some students might already know, because I'm not sure if it has been added in syllabus in university syllabus recently. And when I graduated, it was not. So microservices is a sort of a framework. It is saying that we use Python, we use a .NET stack, we can use Java, anything. It's just the way we build the applications. So this sort of framework helps small businesses to launch things small by small. So they don't have to wait for a system for 1 year or 2 years. Oh, my system will be ready and we will launch that. My website will be ready and we'll launch that. So they can deploy the application in small bits, and that is microservice framework. And I won't go into the too much technical detail, but I hope it will give some insights to the students that the challenges they would be solving in few years when they get into employment or they get into business. So the problems they would be solving will be definitely around cloud computing, microservices, and the challenges would come with the cloud security. So that is another thing that the students can browse through, go into a bit more detail, and see if that is something that they could match their skills to. So these are the things that this disruptive technology, I think that is that I would say it is well rounded now, that you have seen this machine learning, big data analytics, and this cloud computing, microservices. All these things will change the technology world. They're already changing the world. Like I mentioned, Netflix. So from 2008 with 30 employees, it is one of the biggest supplier of all media sort of
it is a platform now. It's just not a selling business. It is a platform where new talents are proving their worth and across the globe. So I would say that that sort of case studies, if you go through on Google, that they will help you to elaborate your thought process of and linking that what you are studying at the moment, how could you link it to the real world? So I hope my talk has given some insights. I would have loved it to go into more explanations, present some presentation to you, but I was a bit short on time. So, and it was really early in the morning here. I would like to thank again the committee for giving me this opportunity. I really appreciate that. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much. And really, we feel very proud that you also participated in today's valedictory session. And surely, because of you, that will be a memorable valedictory. और students, थोड़ा सा मैं brief करूँगा. आप एक बार Google जरूर कीजिएगा how to get TOGAF certification. अब आपको पता लगेगा कि आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो किस प्रोफाइल से जुड़े हुए थे. आपके लिए बहुत ही हमारे लिए खुशी की और हर्ष का विषय है कि मैडम अभी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हैं वहां पर भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके हेडशिप में काम कर रही हैं. तो रियली मैम वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच मैम. Thank you so much. Thank you. I would like, thank you ma'am. Now in this sequence I will call मैडम प्रोफेसर डॉक्टर मंजू पृथ्वी जो है. बीच में नेटवर्क इशू हो गया था जिस वजह से व्यवधान क्रिएट हो गया था. तो अगर मैम अभी हैं ऑनलाइन और कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है तो प्लीज मैं इनवाइट करूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर मंजू पृथ्वी जी आए और जो सेशन उनका जो टॉक था बीच में इंटरप्ट हो गया था वो इसको रिज्यूम करें. रेस्पेक्टेड मैम, आर यू लिसनिंग मी? Hello, is my voice audible to ma'am? I think still there is some sort of distortion, so ma'am may not join us. Then sorry ma'am. So I will proceed the sequence, and in this sequence with a great pleasure I would like to invite head of computer science department NIT कुरुक्षेत्र प्रोफेसर डॉक्टर मयंक दवे जो हमारे आज के सेशन में जो एक्सपर्ट टॉक भी जो सेशन है वो डिलीवर किया जाना है उनके लिए भी और जो पूरा ओवरऑल जो वर्कशॉप है और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी ब्लेस करने के लिए जो हमारे आज के की नोट स्पीकर के तौर पर जिन्हें मैं इनवाइट कर रहा हूं वो है प्रोफेसर डॉक्टर मयंक दवे जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस NIT कुरुक्षेत्र. तो आप सब बच्चे क्लैप करके स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए प्रोफेसर डॉक्टर मयंक दवे. सर आपका वेलकम है. Thank you for inviting me, and I was listening to the feedback and also the discussion which was going on. I am really happy to see that there are students who have started their own venture, and like the earlier speaker rightly mentioned, that rather than getting only the employment, they are thinking of giving employment, and you know, which is exactly the theme for which our Prime Minister is always saying that because you know the population of India is so big, so huge,
it is not possible for all the people to get the job, and if we do not create more jobs, it will be very difficult for people who have, means students who have worked so hard for their studies to get some employment. So it was, and also like the past 5 days there have been presentations and also talks on providing security to your solutions and using technology like blockchain. And if people have started implementing it and making it as part of the their own software, then it is the greatest achievement of the program, because as some student was saying who has already started, that I was really benefited and was able to means might be implementing the same for the software company and software products that they will be giving. So I wanted to speak on another technology. May I share the screen? Yes, sir, you can share. Because you know because of the internet issue, the connection got broken. So I have opened one site. At least I can see my connection working. So I was worried that people are unable to join. Are you able to see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Now it is working properly. No problem. So, like the ma'am rightly mentioned that one of the technology that has disrupted modern development of software and providing applications to the users is cloud computing. So I wanted to talk about little bit related to cloud computing, which is how the Internet of Things has been impacting our lives. So, मैडम हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि you have time, you can take 20-30 minutes. हाँ, 15-20 minutes, not much, क्योंकि ऑलरेडी तो कुछ लोगों को ज्वाइनिंग में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग का काफी टाइम हेलो बल्कि मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे कल स्पेसएक्स का जो मिशन लॉन्च हुआ था, उसमें जो वो आपस में बात कर रहे थे ना अटक के, तो वैसी आवाजें आ रही थी। सर एक्चुअली ना बीएसएनएल का हमारे पास कनेक्शन है 500 एमबीपीएस का, बहुत अच्छा चल रहा था। सडनली एकदम से पता नहीं कहाँ दिक्कत आ गई और उसमें कोई डिस्ट्रप्शन आ गई। मे बी ये हो सकता है कि जो अदर पीपल हु हैव जॉइंड उनका भी कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। मे बी सर। Quickly browse through my slides. Okay. And first is the evolving network requirements. हमने ये देखा अभी आज के सेशन से ये देखा कि there is an increasing demand and people are using cloud computing, shift by enterprises to both public and private cloud services. ये जो हमने the thing that I am speaking, that shift by enterprises, ये कोई आसान टर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशंस डरते थे अपने स्टोरेज को, अपनी कंप्यूटिंग को क्लाउड पे शिफ्ट करने के लिए। इवन हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी
बड़े डर डर के अब क्लाउड सर्विसेज को यूज करने लग गया है, क्योंकि हमको डर लगता था कि क्लाउड सर्विसेज हम यूज करेंगे तो मेरी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। बट अब तो कंपनीज भी घर में चल रही हैं, एक रूम में सर्विसेज चल रही हैं, आपको ना तो स्टोरेज लेने की जरूरत है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की जरूरत है, ना सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत है। एवरी सर्विस इज अवेलेबल ऑन द क्लाउड, so increasing demand. Second is big data. इतना ज्यादा इंटरकनेक्शन हो रहा है सर्विसेज का, जैसे इन्होंने माइक्रो सर्विसेज की बात करी, बिकॉज ऑफ विच पीपल आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस विच आर जनरेटिंग लॉट ऑफ डेटा, और उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए सर्वर्स चाहिए, इंक्रीजिंग डिमांड। देन मोबाइल ट्रैफिक, आज हम देख रहे हैं कि every application is moving to mobile. हम बैंक में जाते हैं, गवर्नमेंट की किसी सर्विसेज पे, वो कहते हैं ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप से ही होगा। अब तो डेस्कटॉप से काम करना आज डिफिकल्ट है, ऐप से काम करना आसान हो गया है। एंड देन लार्ज नंबर ऑफ IoT सर्विसेज, सो therefore this has led to immense development in the cloud computing area, where a totally different computing area is now available to us. So IoT, Internet of Things, anytime, any place connectivity से अब क्या हो गया, connectivity for anything. अब कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख के भूल जाते हैं, हम सोचते हैं यार क्या उसके अंदर, जैसे मोबाइल को घंटी बजा के ढूंढ लेते हैं, घर में गुम हो जाता है, तो क्या मैंने जो वॉलेट रखा था कहाँ रखा था, कोई मेरी ऑब्जेक्ट थी, बुक थी, मिल नहीं रही है, कहाँ रखी थी मैंने। So 99% of the things in the physical world are still not connected to the internet. तो हम चाहते हैं कि थिंग्स हमारी ऑब्जेक्ट्स इंटरकनेक्ट हो जाएं। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो डेटा जनरेट होगा इस इंटरकनेक्शन से IoT डिवाइसेस का, इट विल बिकम 73 zettabytes by 2025. So बड़ा तेज ग्रोथ है, इट इज वेरी फास्ट ग्रोथ, रिक्वायरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स। सो और डेटा सेंटर्स रिक्वायर स्टोरेज space, they require power, they require cooling. तो आप देखिए अमाउंट ऑफ सर्विसेज कितनी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी। सो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट दे आर हेटेरोजेनियस, IoT डिवाइसेस दे आर हेटेरोजेनियस एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड डायनेमिक, कभी ज्वाइन करेगा, निकल आएगा, फिर छोड़ देगा, देयर इज नो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस हैव स्टार्टेड कमिंग एंड दीज जो मैंने यहाँ पर इमेजेस दिखाए, दीज आर ऑल रियल एप्लीकेशंस जिनके मैंने लोगो दिखाए हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, स्मार्ट ग्रिड, कनेक्टेड व्हीकल, स्मार्ट सिटी। आज की डेट में कोई छोटा व्हीकल लेने को तैयार नहीं हो, कहता व्हीकल के अंदर भी इंटरनेट होना चाहिए। क्या मैं अपनी व्हीकल से ब्राउजिंग कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी व्हीकल से व्हाट्सएप कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी व्हीकल से मैसेजेस सेंड कर सकता हूँ। सो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस इन मेडिकल, हेल्थ केयर, स्मार्ट होम एंड एयरक्राफ्ट इंजन परफॉर्मेंस मेंटेनेंस, हर जगह इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी आ रही है एंड इम्प्लीमेंटेशंस आर कमिंग। सो जो अब आर्किटेक्चर्स हमारे आ रहे हैं उसमें क्या है कि कंप्यूटेशंस अगर हम सारे के सारे क्लाउड पे करेंगे तो प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन टाइम ज्यादा होगा, कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो इसलिए अब एक कंसेप्ट आ रहा है फॉग कंप्यूटिंग का, वेयर द IoT जनरेटेड डेटा नीड टू बी प्रोसेस्ड, क्योंकि हमें एक्शन लेना है, वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइस है, वहां नहीं प्रोसेसिंग हो सकती, तो क्लाउड पे करेंगे। अब क्लाउड से फास्टर एक्सेस, बीच में एक
इंटरफेस लगा दिया, एक डिवाइस लगा दी, या एक लैपटॉप ही लगा दिया विच विल डू द कंप्यूटेशन। मोबाइल अगर कंप्यूटेशन नहीं कर पा रहा है तो उसको ऑफलोड कर दी। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑफलोडिंग द सर्विसेज। सो दिस हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ फॉग कंप्यूटिंग, where rather than doing the computation in the cloud, we will do the computation in the fog device. Therefore, we require new APIs which will transfer our data, transfer our messages to these edge of our networks, and therefore this kind of computing is also called as edge computing. So problem क्या आ रही है इसमें? Cyber crime is started increasing, and whatever information we are generating could be impacted by the security attacks. Our information asset could be lost or damaged through various kind of attacks, for example phishing attacks. Then confidentiality of the asset may be lost, and even जिन्होंने क्राइम नहीं किया उनको भी accused बनाया जा सकता है, and therefore companies will have to bear the cost for the same. For example, ransomware damages. Ransomware, what is ransomware? Where some malware is impacted your devices or your computing, and it has made your device incapable, and you are unable to use it. So you have to spend lots on intrusion prevention systems, intrusion detection systems, on firewall, on anti-malware, on OS upgrades, everything. And therefore when we talk about IoT, we also have to talk about the privacy issues and security issues. That whenever we are using IoT, who has access to data? हम बड़े उछल के कहते हैं कि मेरी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है, पर हमको ये भी सोचना चाहिए कि who has access to my data, where is it stored, how many copies exist in the cloud? वो कॉपी सिर्फ मेरे पास है या किसी और के पास भी है? आपने देखा होगा व्हाट्सएप आजकल बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो कहता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, लेकिन अगर वही एंड टू एंड एनक्रिप्शन हो रहा है और साइबर क्राइम भी हो रहा है, साथ में कोई टेररिस्ट भी उसको यूज कर रहा है, तो it has become very challenging that how the security agencies will have to solve these problems. So there are several issues that have to be looked into because of the limitations of the IoT devices. Not only these are difficult to update, you also have to use costly intrusion detection, prevention, firewalls, etc., which may not be possible to install in our mobile device or IoT device, but we have to deploy it somewhere, कहीं तो लगाना पड़ेगा. And then encryption. So there are significant IoT security challenges like weak password protection, lack of regular patches, updates, insecure interfaces, insufficient data protection, and then poor IoT device management. हम लोग डिवाइस को इंस्टॉल कर लिया, उसको भूल गए, कभी अपग्रेड ही नहीं किया, उससे नेटवर्क तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन सिक्योरिटी vulnerability तो नहीं है उसके अंदर. There have been several examples where security breach has occurred even in the CCTV cameras that we installed. Nowadays हम लोग इंस्टॉल करते हैं IP कैमरास, और IP कैमरास को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने नेटवर्क से, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस IP कैमरा को अगर कोई हैक कर लेगा तो हमारे नेटवर्क को वो अटैक कर सकता है? And therefore we need to have trust relationship between the devices. So we need new protocols, new techniques, new authentication schemes. जो हमारे क्लासिकल एनक्रिप्शन स्कीम्स होती हैं जो हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं,
DES, AES, RSA, ये कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि इन सबको रन करने के लिए जो कंप्यूटेशन टाइम रिक्वायर्ड है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टोरेज हम अफोर्ड नहीं कर सकते. So therefore we have to look for new algorithms and new techniques. Now another thing which is happening is machine to machine communication. That means there is no human intervention. कोई human intervention नहीं है. One device wants to communicate with other device, लेकिन कैसे करेगी? उसके लिए हमें new protocols required होंगे, new data exchange methods required होंगे. Nowadays new methods are evolving, like REST, I talked about, and then SOAP is another method for using the services. But point ये है कि अगर machine to machine communication करना है, for example एक कार दूसरी कार से communicate करती है without any human interface, तो कैसे करेगी? तो उसके लिए APIs required हैं, services architectures required हैं, technology required है. Many of the technologies are available, but the security vulnerabilities exist. Like there are different types of attacks that are there on our systems, like configuration attack, denial of service attack, man in the middle attack, selective forwarding attacks, user data privacy attacks, then attack on passwords. We install IP cameras in our home, in our offices. We install access points in our home, in our offices, wireless router in our home, in our offices. Have you ever thought how many times you change the password? What will happen if somebody is able to guess the password? Many a times it has been seen that the passwords that are used, they are frequently used passwords. Then we have another issue that somebody enters your system and acts like an adversary and may intercept and delay or drop some of the received packets. Then what will happen? If the dropped information originates from a sensitive application, then impact of such a threat can be quite significant. We need to have efficient encryption technologies. जैसे मैंने बात करी कि classical AES और DES RSA algorithms वर्क नहीं करेंगे. हमें नए की मैनेजमेंट algorithms चाहिए जो कि encryption करेंगे हमारे लिए और decryption करेंगे. Another problem is of the forward secrecy and backward secrecy. Suppose any device joins our network, is able to use the network, but अगर वो device network leave कर देती है और फ्यूचर में रीजॉइन कर लेती है, तो क्या वो डेटा पैकेट्स को डिक्रिप्ट कर पाएगी? एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम कीज को पीरियोडिकली रिफ्रेश नहीं करते तो प्रीवियसली यूज्ड की भी यूज हो सकती है और अटैकर उसको यूज कर सकता है. तो दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर आल्सो टू बी अटेंडेड. And therefore, when we look into the complete IoT architecture, we need security at IoT user and IoT device and in middleware, in IoT gateway, in the access network, जो बीच का network है, network connectivity, then at the cloud level, then at the application level. We may have problems like impersonation, where anybody can spoof. अब आजकल गवर्नमेंट इवन हरियाणा गवर्नमेंट बात करने लग गई है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स की. अगर उस इलेक्ट्रिसिटी मीटर को जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है किसी ने हैक कर लिया और उसको यूज करने लग गया, यानी चार्जेस उसके अंदर डालने लग गया, तो पे आप करोगे, यूज वो करेगा. So that kind of problem is also to be solved when we are making use of IoT. अब हम बात करने लगे हैं कि
wearable devices, e-health applications. So अगर e-health applications को अटैकर ने अटैक कर दिया तो ह्यूमन लाइफ को ही थ्रेट हो जाएगा। अगर वो गलत डेटा डॉक्टर्स को सेंड कर देता है या क्लाउड पे जहाँ डेटा अपलोड हो रहा है, सो विच इज परफेक्टली, ये बिल्कुल पॉसिबल है थ्रू मैन इन द मिडिल अटैक्स, वेयर द अटैकर इज एक्टिव बिटवीन front end sensors and back end service systems in order to achieve eavesdropping of fake or fake data. So when we are saying we are deploying healthcare system, or in future we are thinking of healthcare system which will be using devices implanted on our body for taking blood sugar or blood pressure, then these problems are there. Then resource exhaustion, which can also be a problem because attacker may install a software which drains our battery of our mobile device, of our IoT device, of our laptop, and may lead to impersonation kind of attacks also, where the attacker disguises itself. The attacker may install fake software updates also. कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ मेल्स आती हैं, हम लोग अननोइंगली मेल पे क्लिक कर देते हैं, वो मेल कहती है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट अर्जेंट अपग्रेड है, आप इसको क्लिक कर दीजिए सो दैट अपग्रेड आपके एंड्रॉइड में, आपके लैपटॉप में हो जाएगा. समटाइम्स दे आर फेक अपग्रेड्स, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वो अगर कॉन्फ़िगरेशन अटैक हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी मशीन एक बॉट की तरह से काम करने लगेगी. तो अब बॉट में क्या होगा कि एक आपकी मशीन एक बिग नेटवर्क का पार्ट हो जाएगी जो कि आपकी मशीन को भी हैक कर लेगा और आपकी मशीन की हेल्प से दूसरी मशीन को अटैक लॉन्च करेगा. सो एक चाइना की तरफ से अटैक हुआ था जिसमें एक छोटी सी चिप उन्होंने मदरबोर्ड में लगा के दी थी उन डिवाइसेस में, कैमरास के अंदर और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड्स के ऊपर, और उस चिप से सारा डेटा वो लोग कैप्चर कर रहे थे और अटैक लॉन्च कर रहे थे. सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर सीरियस एंड वी हैव टू लुक इनटू दीज प्रॉब्लम्स. I will quickly try to wind up by mentioning one attack which is Mirai IoT malware, which was using the IP cameras to infect various devices and create an army of attackers. और आपको पता भी नहीं लगता, आपकी मशीन एक नेटवर्क अटैक का पार्ट हो जाती है. और अब आजकल therefore nowadays people have become really serious. अभी एक स्टडी आई थी रैंसमवेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन कंपनीज ने पिछले लॉकडाउन से लेके नए अब के लॉकडाउन तक मोर देन $7 बिलियन का रैंसम पे किया है, सिर्फ इसलिए कि उनका लोकली डेटा रिकवरेबल नहीं हो पाया, आपकी मशीन को अटैकर ने एनक्रिप्ट कर दिया, आपका क्लाउड के ऊपर डेटा नहीं था, आप अपने डेटा को रिकवर नहीं कर पाए और अटैकर ने आपकी सिस्टम को हैंग कर दिया और मैसेज करके मेल पे भेजा कि आप अगर आप मशीन को यूज करना चाहते हैं तो इतना रैंसम पे करिए. इसका रिसेंट एग्जांपल्स एक कॉलोनियल पाइपलाइन यूएसए की थी. यूएस गवर्नमेंट पेड मनी टू रिकवर फ्रॉम दैट अटैक. इसलिए अब एक ब्रांच ऑफ रिसर्च डेवलप हुई है जिसको बोलते हैं नेटवर्क फॉरेंसिक्स, which tries to identifies that whether some packet that comes to your machine is a malicious packet or not. So there are several security issues that have to be looked into whenever we are deploying our devices. When we deploy a device, like I mentioned earlier,
जब हम डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ में एक एन्क्रिप्शन की हमें मिलेगी, लेकिन अगर वो डिवाइस हमने छोड़ दी यूज करना तो की एक्सपायर हो जानी चाहिए। ऑल्सो अगर उस डिवाइस को हमने सेल कर दिया किसी और को, तो दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी एबल टू यूज द डिवाइस, लेकिन नई की के साथ में, नॉट विद द अर्लियर की। सो देयरफॉर this comes into IoT device life cycle management, because when we are saying 90 billion devices in the world, and when we are saying that they will be connected to the internet, attacks will come, and we have to use various software like malware detection. So I talked about Mire's name. It came in 2016, but nowadays several IoT malware have been discovered, and people are now using machine learning techniques for detecting malicious programs on your smartphones and on your desktops. Android has captured market share of approximately 80% around the globe, and new malware which are Android malware are attacking our Android phones. So people are using machine learning techniques based on traffic anomalies like high network latency, high volume of traffic, traffic on unusual port. Port is a network, computer network term, and unusual system behavior. So unknown bot को detect करना, capability to detect new or unknown attack. So people are using machine learning techniques to detect malicious. So this was briefly about what I wanted to talk about. Thank you very much. Thank you, sir. And Thank you very much. I have completed everything in 20 minutes. Otherwise, discussions would have taken 50 minutes or 1 hour. No, sir. Thank you, sir. And surely our participant get beneficial from your talk, as well as we people also, sir. And in future, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हो और आप हमारे विश्वविद्यालय में आए, और फिर हम एक 2-3 दिन का लगातार एक सेशन रखें। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपकी टॉक श्योरली हमारे स्टूडेंट्स और हमारे सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही। थैंक यू वेरी मच, सर। Thank you very much for inviting me. I am thankful to all the organizers and also the speakers who patiently listen to me. Thank you. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अभी इसी सीक्वेंस में मैं अभी आमंत्रित कर रहा हूं, जो हमारे कल्चर का एक पार्ट रहता है, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर शिवानी गुप्ता जी आप आए हमारे बीच। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ ये करना चाहूंगा कि जो भी आप ये गूगल फॉर्म वर्क आपने देखा है, ये सभी डॉक्टर शिवानी ने ही डिजाइन किया है, सारा वर्क वही देख रही हैं, तो आप इनका भी ताली बजाकर स्वागत कर सकते हैं। अब मैं इनवाइट करता हूं कि शिवानी जी आए और जितने भी हमारे डिग्नेटरीज आए, चाहे पार्टिसिपेंट आए, सब लोगों का एक वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। शिवानी मैम। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. First of all, I, Shivani, would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor S.K. Gakharji, under whose guidance not only our department, but also our university has been continuously progressing. Due to his cooperation, this workshop has become a success. I would also like to thank Dean Academic Ma'am, Professor Mamta Kamran ji, for her blessings and support. Now I represent my deep regards to worthy Registrar Sir, Professor Pramod Kumar ji, who has provided complete support in this workshop and academic concerns. I would also like to thank all the deans and chairpersons of all the other departments. Also,
Special thanks to the eminent speakers of the workshop, Professor R.K. Agarwal sir and Professor Dave sir from NIT Kurukshetra. And thanks to the experts from industry, Yash Wagmani ji and Mr. Abhishek Dhule ji. I would like to present my special thanks to our guest of honor, Miss Meenakshi from Grosvenor Systems Limited, London, for her wonderful also. I am also very thankful to Professor Manju Pruthi ma'am and Dr. Mahavir Bharat sir from Department of Mathematics for giving feedback about our workshop. I would like to express my gratitude to Chairperson of our department, Dr. Savita Shoran ma'am, who encourages us to do better and is an inspiration for all of us. This 5 days workshop has become a success due to her efforts. I would also like to thank the coordinator of our workshop, Dr. Satendra Pal Gupta sir, and the organizing secretary, Dr. Reena Huda ma'am, who have played a major role in making this workshop a success. Also, thanks to all the committee members, Mr. Ajay Kumar, Mr. Sudhir, Mrs. Poonam, Mr. Joginder Singh, and Mr. Prashant Bansal. Also, thanks to all the members of the technical team, Mr. Yogesh, Mr. Vikas, Mr. Vijay, Mr. Lalit, and Mr. Pradeep. Lastly, thanks to all the participants for sincerely attending this workshop and learning about new technologies. Thank you, everyone. थैंक यू शिवानी मैम, थैंक यू। और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो उम्मीद करता हूं आप उसे नजरअंदाज करेंगे और भविष्य में भी ऐसी ईश्वर से कामना है। और मुझे अपने डिपार्टमेंट के जो हेडशिप है उस पर पूरा यकीन है कि फ्यूचर में भी इस तरह के आयोजन आप लोगों के लिए होते रहेंगे। और जो क्विज हमने कंडक्ट कराई थी उसका रिजल्ट जो है, जो बेस्ट परफॉर्मर्स की लिस्ट है, वो हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है जो, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोगों को आपके ईमेल एड्रेस पर आपके जो एप्रिसिएशन लेटर है वो आपको मेल कर दिए जाएंगे। एक बार पुनः या जिन्होंने एग्जामिनेशन जो क्विज में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ उन्हीं को एप्रिसिएशन उनके जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एक बार फिर से आप सभी का, पार्टिसिपेंट का, पूरे विश्वविद्यालय परिवार व कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू जी।